Like to welcome all of our members in this webinar. So today topics we had gone to IVS, which is a very technical subject, and therefore we had taken our speaker from each and every states. We'll have with us Shri Sanjeev Kaliswal from Bhilai, Chhattisgarh, Akhay Ketan Das from Bhopal, MP, Vidyadhar Panda from Bhubaneswar, Avdesh Kumar, Dehradun, Uttarakhand, Ram Govind Sharma from Dhanbad, Hanuman Mittal from Gurgaon, Hariyana, Manik Ghoshal from Kolkata, West Bengal, Dinesh and Sharma, Lucknow, Uttar Pradesh, and Praveen Gopalji from Nagpur, Maharashtra. So they will be given some 5 minutes time to speak on this subject. Since this is a very typical subject and Government of India and banks are demanding that the valuation report are being prepared under with the confirmation of IVS. We are talking about international valuation standard, but unfortunately we are not able to standardize in India itself. We don't have Indian valuation standard, but we are talking about international valuation standard. So we have to discuss on that, and accordingly we have to sum up. We have to write a letter to represent from the Government of India as well as the Banks Association, so that some division is required to be done. With us, our chairman Delhi, O.P. Verma Sahab, he will conduct the seminar. This webinar he will conduct, and conclusive speech will be given by him. So I like to welcome all of them in this webinar. The speakers have been arranged alphabetically wise, city wise. From Bhilai, we will start from Bhilai, then Bhopal, then Bhubaneswar. Of course, Sanjeev is somewhat busy in his family program, so he will be joining late. And Bimbadhar Panda, he is in Keonjhar, and since due to rain, he may not be joined. Then we have Avdesh Kumar. Just now he had telephoned me. He's due to accident. His son has the hand has fractured, so he is going to doctor. If he will get time, then he will join us. Otherwise, he will not join us. So we'll start without his absent. We'll start it now. In last week, in last 1 month, we are observing in the WhatsApp group the people of other districts are working on the respective districts where the valuations are there. That is, there is a cross distribution. Now, my intention is that if in Kanpur there are availability of value, then why from Lucknow, why from other cities are coming? In Urei and Jhansi districts, there are valuers, so Kanpur wala is not going to there. Then why the people of other cities are coming to this? So this is become a major factor for which yesterday night we had discussed with our secretary as well as vice chairman, vice president announcing with the RTA consultants. So we are going to do some step against it so that there should not be cross bordering. You work in your cities or your state where there is no availability of value, then of course you can go there. Otherwise, this becomes very bad. And we are going to represent the bank authority also. So we are working on that. Now, some of the valuers are in the group are mentioning that we should go for pen down strike, all these things. See, this is not a small matter which is to be decided. This should be decided from the central level. Then it will forward to the head office. Then we will think about it. The pen down strike is not so easy as we think about. So slowly and steadily we will do it. Recently, Union Bank of India had asked for the indemnity for which I represented, and without indemnity, they are taking the application. And of course, for new applicant, they had requested for new applicant. So existing valuers will be working as it is, and without indemnity, they have accepted it. So we have a very short time because we have to take much more time in group discussion. So I like to introduce our chief guest. Our chief guest, he is from Hisar region, Union Bank of India. He is the DGM in Hisar region of Union Bank of India, Hariyana. He has joined, I will like to clear, basically he is from Odisha, and he has also posted here in Kanpur also. He started his banking career in 1996 in Raipur. Thereafter, during 2017 and 16 and 17, he was in Kanpur. From Kanpur, he had gone to Banaras as well as Jaunpur, and for last 2 months, he is in Hisar. He has taken the charge of Deputy General Manager and the Regional Head of Hisar Unit. So I like to welcome him in this webinar, and I would like to request him to tell something us about the banking, since we are the part of the bank. Value, Sir Nanda sir. Good evening, my friends. Good evening, all the representatives from All India Value Association.
led by Engineer S.S. Dasa from Kanpur, the Chairman of this PLC, Engineer Vivek Asthanaji, Honorary Secretary, Engineer Ramakant Jadavji, and all the esteemed dignitaries attending the webinar. Today, the topic of the webinar is a little bit more very new of its kind. That is why the compliance with the international valuation standard is very difficult. As the engineer S.S. Das already rightly told that we have not have the permanent ground rules or ground reality regarding Indian valuation standards. So it's very difficult and it's very new and challenging topic for all of us to attend about international valuation standards. As far as banking laws, banking partner concerned, wherein we always for valuation of the property or for tangible or intangible asset, were depending upon you fellow people in your respected engineers. We are having a panel constituted at different levels for different regions, mainly done by head office or done by the zonal office or suppose whatever we may call it. But after due scrutiny, they are recently, as Dasa rightly told, in Union Bank of India, we are also seeking the application from all the valuers who will be interested, who are interested to be a part of valuer system in Union Bank of India. And there are some anomalies are there. They have already pointed out that about the same. I am nothing to endorse. The thing is that the valuers are very important and for the business life. Suppose of late what we are seeing in the valuation of particular PSU banks, values of PSU banks they are giving let us say valuation of 100 rupees, whereas the peers of foreign banks or private banks they are giving valuation of 120 or 130. Likewise, in some cases the same property our valuers are giving little bit lesser price and the value from counterpart private banks or MNCs they are giving higher valuation. So ultimately what happens, we are not as a banker, as a PSU bank, we are not able to finance that much to the party and we are not giving very competitive rates. As in some of the banks, in my bank also, the rate of interest depends on the percentage of collateral security. Suppose if collateral security is less than 100, their valuation is somewhat less. If it is more than, if it is more less than 100, then the value rate of interest with the pricing as per risk basis it will be little bit more. Suppose valuation of the property is more than 150%. So then this price or rate of interest for the proposed loan will be still lesser. So valuation depends on very one of the very most vital criteria for taking customer to our fold. If we give the competitive price, then the customer will be with us, and if his valuation is not as per fair market value or a little bit lesser side, so that customer may not be banking upon us, we will switch to some other bank. In today's fear competition in banking industry, particularly in MSME sector, valuation has its very important and vital role. So all the banks they are very much dependent upon the valuation of the property. Valuation of the property depend upon in our bank, Bank of India. The valuation they are also categorized the valuers like ABCD and ABCD depending upon the number of valuation they are giving and the quality, some feedback they are giving the owner of this, where they are giving the feedback to our head office, depending upon that valuer has been graded as ABCD, whatever it may call it, and some other banks or some other others may have some different yardsticks. But valuer has very, they are one of the stakeholders of the bank or financial advisor. We are in Union Bank of India, it is a general practice of student to meet up on the valuers at least once in a half year to know the exact ground realities and to if at all any something
disorder, I cannot say disorder, or something difference of opinion is there, it can be sorted out. So, whatever I learned that this topic is very challenging and very new and fast of its time to me also. So, I'll be keenly observing the points and will definitely gather some good knowledge about the international valuation standards and what are the difficulties, what are the modes, how to go forward, and what are the difficulties at present we are facing and in future we will be facing. So I will not be embarrassed between the discussion and the knowledge guidance. So now I request to my senior engineer Dasa to camper. I will be definitely getting some good feedback and I will try to convince my higher office to have a view or look into it. Thank you, sir. Thank you, sir. Over to you, Dasa. Thank you, sir. On behalf of All India Fellow Association, I would like to thank Nanda sir who has given his kind consent to be the chief guest. Now, I like to request our chairman, Institute News Kanpur Local Center, Vivek Astanaji, to speak on this occasion. Thank you, Das sir. Good evening, friends. Respected Chief Guest Nanda sir from Regional Manager Union Bank of India Hisar, हमारे respected Das sir, AIVA के President, हमारे साथ जुड़े आज के हमारे सभी एक्सपर्ट स्पीकर्स, प्रोग्राम के हमारे कन्वीनर इंजीनियर ओपी वर्मा साहब, आईवा के महासचिव इंजीनियर के उपाध्याय साहब, डिवीजन ऑफ इंजीनियर्स के मानद सचिव इंजीनियर रमाकांत यादव सर, हमारे इस वेबिनार में जुड़े सभी रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स, डिग्नेटरीज, सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट। एक पहली चीज तो ये मतलब इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस इन व्हिच दिस सेमिनार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का ये वेबिनार का टॉपिक वाई कंप्लायंस विद आईवीएस इज डिफिकल्ट। जैसा कि अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब ने, हमारे आईवा के प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारे इंडियन वैल्यूज के लिए इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कोई डिसाइडेड नहीं है। हम लोग आइदर जो है वो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड या और भी कंट्रीज के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन पे ही है जैसा हम समझते हैं। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइप की फील्ड है, क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें सारे स्टैंडर्ड्स हमको खुद डिसाइड करना है, किस स्टैंडर्ड को लेकर के डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस किस तरह से वैल्यूएशन करना है। तो इस फील्ड में इनफैक्ट हमें लगता है कि से गाइडेंस की क्लासेस के इन सब की भी कमी है। और ये मैं ऑल इंडिया वैल्यूअर्स एसोसिएशन का जो प्रयास है दास साहब ने शुरू किया है कि इसमें ये वेबिनार हो रहे हैं, इससे हमारे सभी इंडियन वैल्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आई अप्रिशिएट एंड कंवे माय थैंक्स टू दास सर फॉर दिस सेमिनार सीरीज ऑफ दिस सेमिनार। इसके साथ ही मैं हमारे जो सभी एक्सपर्ट स्पीकर जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा अपने इस प्रोफेशनल फील्ड में एक्सपोजर और एक्सपर्टीज को काउंट करने में। तो इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने भी इसमें एक कोर्स शुरू किया हुआ है जो कि उसके वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो शायद आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों को जो है वेलकम करता हूँ। दास साहब से जो है आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। एक्चुअली आज सबसे बड़ी क्या कल थी हमारा रक्षाबंधन, तो सभी भाई लोग अपन बहन के यहाँ गए हुए हैं। हमारा उपाध्याय भी आज अपना बहन के यहाँ लखनऊ गया हुआ, तो अभी रास्ते में आ भी नहीं पा रहा, तो इसलिए हमारा आज अटेंडेंस जो है बहुत कम है और रहेगी मेरे ख्याल में। तो उपाध्याय क्योंकि नहीं है हमारा सेक्रेटरी, तो उसके जगह पे मेरे प्रोग्राम देखनी पड़ रही है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब और रमाकांत यादव जी को कि हमारा स्पीकर का थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू।
Are you audible? Yes, sir. Thank you, sir. Good evening to you all. धन्यवाद। लास्ट स्टॉप आज के मुख्य अतिथि आगे नंदा जी, आईवा के प्रेसिडेंट हमारे दास साहब, इस सेमिनार के कन्वीनर ओपी वर्मा जी, तुम हो और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन विकास खाना जी। ऐसा आज तो दास जी ने पूरा जो है स्पीकर तो आज इतने स्पीकर इन्होंने इकट्ठा किए हैं हम लोगों के लिए, और निश्चित ही इनको सुन करके सब लोग लाभान्वित होंगे। और आज का टॉपिक भी है कि इंटरनेशनल वैल्यूएशन सिस्टम जो है कंप्लायंस कैसे डिफिकल्ट है करना, इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। इसके पहले स्पीकर हैं संजीव कालिसवाल कासरीवाल। He is a registered valuer of Ministry of Finance, Government of India, and practicing as a valuer of land and building. He is the treasurer of AIVA of MPCG Center. He is from Hilai, Chhattisgarh. The second speaker is Akhya Khetan Das. He is registered valuer of Ministry of Finance, Government of India, and practicing as a valuer of plant and machinery. He is the secretary of MPCG unit of AIVA. Basically, he is from Odisha, but have established in Bhopal. Third speaker is Vidyadhar Panda. He is registered valuer of Ministry of Finance, Government of India, and is practicing as a valuer in land and building. He is completed LLB and have got certificate of practice of Bar Council of India. He is the chairman of Odisha unit of AIVA. And fourth speaker is Avdesh Kumar. He is the registered valuer of Ministry of Finance, Government of India, and is practicing as a valuer in land and building. He is the senior most valuer member of Uttarakhand of AIVA. And fifth speaker, Sri Ram Govind Sharma. He is the registered valuer of Ministry of Finance, Government of India, and is practicing as a panel valuer of land and building. He is from Nanda and is the chairman of Jharkhand Center, AIVA. And fifth speaker is Harman Mittal. He is registered valuer and practicing as a valuer in land and building. He has got degree in urban planning and MTech in environment engineering. He has also done MBA in real estate. He is from Gurgaon and is the secretary of Hariyana unit of AIVA. And seventh speaker is Manan Ghoshal. आज हो नहीं क्या? Manan Ghoshal. He is registered valuer of अच्छा, वोट ऑफ थैंक्स तुमको देना है, and is working as वोट ऑफ थैंक्स तुमको देना है, वोट ऑफ थैंक्स। He is also done his master in अरे civil कोई है नहीं ना, He is from उपाध्याय नहीं, ललित नहीं है। West Bengal. And next speaker is Dinesh. अरे वो तो ललित वृंदावन में है। He is the registered valuer of Ministry of Finance. He has वो तो 1 घंटे बाद also got registration from AIVA. He practicing as a valuer in land and building. He is from Lucknow. और किसे तो होना पड़ेगा। Praveen Gopal Jadolkar. He is registered valuer of Ministry of Finance and is working as valuer of plant and machinery. He is from Nagpur and associated with the Maharashtra unit of AIVA. And Shri O.P. Verma, इनके हम लोग इसके पहले भी कई लेक्चर सुन चुके हैं वर्मा जी के।
He is also convener of this webinar. He is a registered valuer and is working as a panel valuer of plant and machinery. He has also qualified from IVBI. He started fertilizing from 2008. Prior to that, he had served EPFT since 1977 to 2006. He is the senior most valuer of Delhi and is the chairman of Delhi unit of AIVA. ये हमारे जो है नौ 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 स्पीकर हैं नहीं नौ या 10 नो स्पीकर सर का कन्वीनर है 9 स्पीकर हैं तो इनका ये बहुत संक्षिप्त जो है ये बायोडाटा हमने आपको बताया तो अब मैं दास जी से अनुरोध करूंगा कि जो है अपना आगे का कार्यक्रम अपना शुरू करें धन्यवाद दास जी थैंक यू सर अभी संजीव का कोई फैमिली प्रोग्राम व्यस्त है तो जब उससे मौका मिला तो ज्वाइन करेगा तो मैं हमारा अक्षय कीर्तन दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अपना पास शुरुआती पारी वो खेलेंगे सर अक्षय कीर्तन दास सर Okay, thank you, AIVA, for giving me an opportunity. And I also welcome all the members as well as Mr. Nanda, who is from the Union Bank. So, and my big introduction is already told, but basically I am BTech from NIT Warangal, and then I have done my management from Delhi School of Management. I have been working in India and abroad for about 20 years. I was lastly CEO of a public limited company before starting the profession. So, ours is a private limited company where we are into valuations, we are into lenders in the independent engineering services, also providing technical evaluations and other consultancy. So, we do valuation for all assets. There are different values, different kind of things. So, coming back to the subject of IVS, so somehow personally I have got exposure because I have worked in Japan, I have worked in Germany. We have also worked for Youngstown, then for PricewaterhouseCoopers. So we have been involved in a lot of corporate merger, acquisitions and other things prior to the new regime. IVS is such a vast subject, and Mr. Das has told me to cover this in 5 minutes, so it's very impossible task. But I'll just quickly cover it too. Few members are absent, so maybe 1 or 2 minutes more. I think Mr. Barma will allow me. I will continue. sir you continue Come to this is an education for all the either valuers as well as bankers and all the people who are connected time to लगेगा। valuation profession. क्या बोलूं And I will introduce valuation council, standard council, based in London. And there are क्या होना क्या था members from many countries. Earlier there used to have 8 to 9 IVS. बोला देंगे So Number now नहीं they है। are integrated, they are the lead players and they are involved members from various countries. In India, we have got IOB, we have got the practicing PVI as the two members in that council. So then, who can use these standards? The second issue is who लिखाओ तो लिखाओ can use. Anybody and everybody who likes to adopt it can use it. There is no compulsion. सर जी हमारा जनरल सेक्रेटरी नहीं है तो आप वोट ऑफ थैंक्स कर दोगे Anybody. So now, India it has ठीक come है to एक्चुअली सभी लोग त्योहार में चले गए भाई बोलो बहन के यहाँ really कोई नहीं after the insolvency and ठीक bankruptcy सर of ओके India, IBI Act, and thereafter, because they have to handle issues related to insolvency. So these things has come to limelight. This is with the advice of IOB and other professional bodies who
themselves joined hand with the International Valuation Council and uh, introduced this scheme in a different way, which is still not legalized. Still not legalized in any court of law, not through any act. And it is also not properly documented, not properly labels are not properly trained. Users are also not at all trained. So just the word appears as if the international valuation standard means something coming from the moon and it will change the entire world of valuation. So that's not correct. Then we can, the next point is, can it be used without their permission? No, it cannot be used without their permission. So I will further highlight after anybody asks any question. So this is no part of this publication may be translated, reprinted, and these are all conditions set out in AIVA standard. So that itself means there was their hands from while making the standard itself. Like any standard cannot make valuation foolproof. They are only guidelines. They also don't guarantee that valuation will be foolproof by using this standard. Then legal acceptability in India do not have any legality as I told. It is only a kind of advisory and adopted by people at different level. There is no legality up to now, to my knowledge. Anybody can differ with me. Then approach and methods of evaluation. So this is not different than what conventional. सर इनके बाद आपका होगा क्योंकि ये दो आदमी है ही नहीं अभी. IVS says that it can have valuation in three methods: cost approach, market approach, and income approach. Any senior valuer who is into the profession are also taught this all the methods. So this is not new to India. Only thing it was not documented. Right. So then we come to volatile nature of IVSC. It is highly volatile because it is continuously being reviewed. If somebody is following it, every 1 or 2 months there are some amendments. So, and when you see at the actual use of it, then you will find, for example, in banking sector, nowadays for empanelment, every valuer is asked to write that you will make the valuation as per AIVA standard. I have collected valuation reports of the most eminent valuers in the country submitted to bank. 99% I have not seen any valuation done as per AIVA standard. So, and I am telling you, with AIVA standard, you cannot do valuation for normal SME sector, housing sector, or even mid-corporate sectors. Adopting AIVA's valuation standard is strictly followed because you will not get good data, information. Bank wants valuation in 3 days' time, 7 days' time. And even we do large number of corporate valuations. We have valued property worth more than 10,000, 20,000 crores. There also there is a problem of data availability. And if you keep on asking data, it takes 1 month. Information and data. Will any bank give you that much of time? So that is another aspect which can be further discussed. Then another point is presence of black money and its investment in real estate. That has a serious impact while valuing property in India, particularly real estate. Because
only 2-3 days before, still that report to be submitted, we have been doing evaluation where the guidelines rate, which is now every bank wants us to provide guidelines rate. The guidelines rate of the land and building is about 53 crores. And plant and machinery, so this is the guidelines rate. And the property is sold through initiative with the land and building at 8 crores. And plant and machinery sold at 15 crores. And this is a recent deal. Okay. Now the same property purchased by a group who are expert in running that industry. Now it is getting reconsidered by bank, by India's largest bank, and there are another consortium financing. Such cases usually come. Now Mr. Nanda is there, he is a senior banker. So my immediate response was, if you ask me and you ask me as per the EA, so this market value will be same as what is been, what value it has come by recent sale. Because that is the instance of sale. Otherwise it is a property worth 50-60 crores. And if you set up a greenfield projects with plant and machinery and land, it may be running to 150 crores. So that means the valuer who has done the valuation during liquidation must be wrong, or the process that is followed must be wrong. Because the decision is done by NCLT, so it is not questionable. The conditions is different, it is just a liquidation of scrap value. Okay. So right now, whatever value we give, there is always a question mark on us. If by any means the new bankers and new promoters, they don't go wrong. I think if Mr. Nanda is in the same chair, he will also have the same view. So, and I will do this valuation of 50 crores plus applying AIVA standard. And same I can also prove with 15-20 crores applying AIVA standard. So it is nothing great that through using a standard you can have a fixation and your valuation. But that doesn't mean I will come to the concluding end after some time. I hope I am with time. Yes, sir. My time. Yes, sir, you can continue. You can continue, sir. Then next point is end user's ignorance. I'm sorry to use this statement. End user's ignorance means bank is not the only organization who seeks valuation, but in India, 85% of the work are from bank. Valuers will not survive without bankers' support. Then income tax, then merger, acquisition, other miscellaneous valuation there. And usually, normal valuers don't get those opportunities. Large mega merger, acquisition, and corporate valuations are done by outside companies who only do some subcontract job for them. Actually, they don't do anything. For youngster now, we did a valuation at 1 crore, which they got at 25 crores from Government of India. I swear that nothing was done by them. Only presentation they reorient. But we have that mindset. The entertainment criteria is such that it should have 100 crores turnover, it should have this. So that means Indian valuers are pushed to the corner, and you are throughout your life you work on this. Small valuation, SME, MSME, and get into a lot of trouble there also. So then valuers get tempted many times, get into overvaluations, get influenced by the banker to get into overvaluation. Many times influenced by the borrower. These issues are there because IVS standard is implemented. But if you want to value property as per IVS standard,
then the time that will take at least 5 to 10 times more than what the normal valuation will be. Strictly, you, so that you don't get, and you don't also get. Bankers have their own constraint. They are competing with private banks. They are competing with markets, and so only area where they can scale down their cost is probably reducing the valuation fees, which I do not 100% agree, because many times we are dealing with properties of crores and we will be negotiating with fees of 5,000 less, 2,000 less, and other things. That's also not a correct view. So a balance has to be done. We are not in the other side of the table, and thus where left and right sides are value and legal opinion providers. So we have to work together and bring these concepts and take this concept up to the top level, the top management. Many times bankers at the working level, they only follow the policy that is framed by the corporate office. And corporate office, you don't have the experts from the valuation field. Primarily all the valuation policies are done by the legal team. And also, instead of IBA, the International Banking Association, having the standard, we should have the IBA standard, then IBA standard. This may be a sarcastic remark, but that is also a fact. Then naturally, we will take care of the banker interest and formulate policies which are not practical. Uh, Mr. Nanda was talking about private value banks. It is a fact. Private bank, anytime, the value is 1.5 times average more than what you find in public sector bank. It's not conservative values now. Many valuers, excellent valuers are there with public sector bank. In private sector, the bankers as well as valuers, they are not for that much kind of responsibility. No CBI, no this kind of issues. That the loan is given on business fundamentals. Whereas the same thing is there in public sector bank, but they don't take this. They want to secure the assets, and the value is many times dictated by the bankers. I'm not telling any individual, but this is the fact of life. I think everybody behind the screen will agree. So we have to make a balance. We have to save ourselves, and we have to give our candid opinion to the bankers. There are many bankers. I interact with the very top people in the banking, almost all the banks. At the top level, there is an understanding. We are not shortage of any work, though there are fights all the time. So you get your share, but we all valuers should follow certain standard for ourselves, not for bank, because it is a nation money which is being invested in various channels. Bankers may have their targets, they may have their compulsion, but we cannot be over conservative. At the same time, we cannot be open floodgates for anybody and everybody. So, it's a very vast subject. Valuation is a very vast subject. It is not as simple as we all think. More into it, more kind of issues will keep coming. So, I am not against IBS, but adopting the IBS in the right way through proper training procedures and bringing in bankers and valuers on board, then it will improve the quality of valuations, and also it will improve the quality of valuers, the living standard of the valuers. Personally, there is another thing, to my knowledge, there is no validity. International valuation standard, I don't know what is the latest update, but it is valid for then and then. If I am issuing a valuation report today,
then it is valid only today. It has no valuation. As a matter of practice, in India, I used to be in some committees and all, we thought that at least it is valid for 90 days. But banks usually, in a regular way, do valuation after 3 years. So, so then and there, suppose if you strictly go by the IVA standard, the valuer has a strong defense. And there are practical instances that few years back was this US subbank case where the largest banks of the world also collapsed. The property value collapsed multiple times. So where was the international valuation standard that time? I think that time, I don't have the paper, I tried to do that time in Times magazine. There was an article where there was a praise for Indian valuation standard and Indian banking system itself. Because the $1 million house got crashed to 1/10 of the value. People who are having property, keys were handed over to bank. What will the bank do with that? So such variations are there. That is why economic analysis are there. Another thing that many times I have told you outside, it's economists who do the valuation. But in India and few other developing countries, some underdeveloped countries, the engineers predominantly do the valuations. So when it comes to stability, engineers' valuations are more conservative. But when it comes to certain kind of merger, amalgamations, when you want to sell a property at 1/10 of the year, this time economic analysis will help. And Government of India has come on to all these IVBI and because they wanted massive disinvestment and also recovery of loans. And for example, factory. I think I'm running out of time, sir. Just the factory will be running, having this much of turnover, excellent machinery, asset quality is good, but has gone NPA and its market capitalization is very low. If somebody will buy it, he will show interest based on its income generating ability, not on its cost. Okay. So if an Indian valuer or we people go for that valuation, we take land value, suppose BHL Jhansi. We take land value like this, landed machineries, we'll add it up to this and don't look into the things whether machines are obsolete or not, whether so all these things will lead to a valuation which is wide different from international values. And that is done also many times to facilitate easy buying. So the background is very clear. So in short, now I will conclude that as far as my own view is concerned, this IVA standard should be applicable for merger, acquisition, amalgamations and large corporate and bankers should seriously consider to get into the normal year. Our own standard can be formulated. It was undefined, but India mein valuation is there quite long. So we can formulate an Indian standard which will regulate the value as well as uh, uh, take care of the bankers' interest and make it quick disclosures. Okay, thank you. Thank you all of you for having patient listening. थैंक यू दस साहब, हमें पता था कि आप नॉन स्टॉप है। I will exceed my time. तो People are absent, so I took that opportunity. मैं राम गोविंद शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम धानबाद झारखंड, ही कम फॉरवर्ड एंड स्पीक ऑन दिस सेक्शन। राम गोविंद शर्मा प्लीज। Okay, sir. Namaskar to all of you.
This meeting looks more important, having IBS agenda in presence of valuable persons, and so better response is expected. IBS confirming property and right property are complementary to each other. Physical existence of such properties should be in accordance with its legal documents, and both should be so genuine that never any issue be created. So for value properties and purported property for valuation are really right property or not, which is our aim, for which the observations about genuineness of the property looks better for this decision. During valuation of land and building, various issues come to face, some of which may be taken here with as example for the need to. During inspection of the property, generally different issues are found that land is not demarcated, ये देखो हनुमान मित्र का नंबर land 6 is नहीं है partly देखो demarcated, हनुमान land मित्र shape differ than shape deed, land area differ than shape deed, land differ than shape deed, extra land located under the boundary without internal demarcation, road width and its location position differ than shape deed, building constructed without approved plan, building constructed not as per approved plan, internal construction mostly differ than approved plan, somewhere building is found without boundary which doesn't clarify the actual land area. Somewhere sale bid value found more lesser than the market value which may be due to hidden like money also. In this way, the inspected property for valuation generally found in defective condition in different way, mostly in Bihar, Jharkhand, UP and across the country, which can't be said as right property, that is not in IBS conformity. Such defective properties are sold and purchased in open market in view of being such mostly availability in the locality, which doesn't mean that these are legally right property in terms of IBS. नंबर है ये ना 9427 68766 The proposed property for valuation and so far value and mortgage property in the bank are mostly of this type. Then how and why these are now required to certify in IBS conformity. In such consideration, IBS is not applicable in India, but the banks are now insisting to sign this in IBS conformity, and many valuers are blindly doing so in greed of assignment, which is not ethical and thus it should not be applicable. In the same way, to certify such defective property in the conformity of IBA guidelines as right property is also not ethical, but it is added in the annexures that should also not be applicable. The valuer comments about the valued property have been desired to write in the annexures, but it is noted therein that it shall not be for limiting the responsibility of valuer valuation report, but by if the proposed property for valuation is not right property and valuer report is honestly done subject to the noted comments, then how valuer is confused? Here, the risk goes to the management because they are using such report willingly in the bank discretion. Thus, such objectionable column is also not applicable. Engineering formula is applicable for right property only. Thus, in case of any defective property, valuers and the management must be careful in their risk and responsibility because such valuation is done in hope and expectation only. And so, its surety can't be taken in so developed spiritual based society.
For example, banks generally accept the building value of approved plan area out of whatever built at site. Suppose any ground floor building is constructed in 1500 square feet and as per approved plan it is 1000 square feet. Then bank accept the building value of 1000 square feet. This self-managed system is unethical, at which the valuer and management must be aware that what will be condition of the building and the value if the extra built portion 500 square feet will be demolished. The so developed Kaliyug, any adverse situation may not be denied, which may come to face in any peculiar manner and it is known to the God one. For learning such example, such example has already been seen in UP and as per TV, it is commonly known as Baba Ka bulldozer action or illegal construction. In such observation, the option for valuation remains that the management should provide right property for getting right valuation, but such property is very rare in the locality. Or if desired and accepted as earlier, the valuation may be done with applicable comments without any objectionable nature, with having clear in our possibility. All of the unexpected problem in valuation profession has come to face indirectly due to some of the valuers having inferior thought and responsibilities, thus requested to them for developing themselves, which is actual solutions for its debate. Thank you, sir. Now I request to Mittal Sahib, H. Mittal Sahib from Hariyana, Gurgaon. He is our secretary there. Please, Mittal Sahib, please come forward and tell something about us. Yeah. Yes, sir. Good evening, sir. I am H.P. Mittal from Gurgaon, Hariyana. AIVA system is being adopted by the developed countries, where everything is available on internet, data is available on internet. But in India, there is a problem in the circle rate as well as in market rate. There is a lot of difference between circle rate and market rate because black money is involved in that process. You don't have any authentic data. If any inquiry comes from CBI, vigilance, we cannot prove if we have adopted this rate on that basis because there is almost 2 to 3 times difference in market and circle rates. Bank is requiring present market value and structure stability, residual life for sanctioning a loan to individual, to company. Structure stability, a technical man can tell what is the इसके बाद आपका होगा. residual life of building because in India there is no data is available for any building when it was constructed, how it was constructed. If data is not available, we have to apply our own methods. What is specification being used by the builder, individual, and moreover, bank is asking for putting rates on makan.com or other sites, which is also not authenticity
because that is being operated by a private agency. And um, property identification is a big problem because our country is developing in a unethical manner. You can't identify a property without proper demarcation, without proper planning. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mithal sir. Now I request our next speaker, Mainak Goswal from Kolkata. Mainak ji, please. Thank you for the opportunity. I was overwhelmed when I found the last Hindi, so you have to speak on this topic again. Okay, sir, I will connect it. So regarding values, sir, today is 13th August, and day after tomorrow, 15th August. I remember Mahatma Gandhi's quote. Keep your values positive because your values become your destiny. When it comes to the IBS, International Revolution Standards, this is our destiny, I think. And as per relevant, yes. Now, what is valuation standard in Indian politics? Valuation standard is yet to be ratified by central government under Rule 18 of the Companies Act 2017. But so many countries have adopted valuation standards. We are not developed like India, like Romania, South Africa, Turkey, Abu Dhabi, Bahrain, सर Dubai, ये नमस्ते सर, इसके बाद आपकी होगी. China, you. हाँ, How to better adopt it? दो लोग आए नहीं, इसके बाद आपकी होगी. Government or through functional agencies, they have adopted. So we are still debating on whether to adopt or not. Right? Until notification, everyone shall conduct conversation as a section 8 conduct a value. It is compulsory there. It is as per legal statute, or the legal update. Now, many organizations, I don't know about AIVA, many organizations like IOB, IOB, ICAI, PVAI, ICAI, Tata Conference, Commission of India, IOB, all have adopted IBS or members with the IBS. You know the website of IBS is government, is by year. The evaluation in post-COVID era has some reasons to cheer because see, but the population from 1901 to 31.6, it is as per 2001 census couldn't be held. But there are many organizations are reporting that population of increased to 40% or increased to 40% by 2030 or by 2050 increased to 30% by 2030 and 40%. That's why 31% is always there. 40% by 2030 and 50% by 2040. These are the predictions of many entities. So population will increase with the increasing population. Our scope of work will also increase. And in the union budget 2022-23, completion of 80 lakh homes is already has been done and 48,000 crore has been allocated as a total monthly our provision for urban and rural development. These are positive points to see the valuation, more valuation to be done. Reduction in Indian states like the banks is positive for loans to multiply. Stamp duty reduction in Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, West Bengal, Delhi have all reasons to cheer because we can save from the government to the private and we can divert money to private. Real estate may develop or has a chance to develop. And change in judicial route, that means more FIR or more FIR, that is for area ratio or court stress index has been increased. Also a reason to cheer and development of metro and smart cities are all positive reasons why valuation should go up. I mean, so many scope of work is there, but we are still not IBS. What is IBS? There are two standards, general standards and asset standards in IBS. There are 5 general standards,
101 says the whatever value says 102 says the investigation and compliance of the valuation. 103 says about the report writing standards. 104 of the basis of value and 105 the approach methods of value. There are asset standards, 7 asset standards. I was 200 because of business 210 intangible assets, 200 non-financial liabilities, 300 standard equipment, I was 400 real property interest, I was 410 development property, and I was 500 family interest. Now, before I have to be standard, I think we should have more training on this. Standard, asset standard, and what how to come up with ideas and what purpose they serve. I see. पार्टिसिपेट नोट कर रहे हो? Also, there is one point, banking valuation. What does banking valuation पार्टिसिपेट नोट हो रहे हैं? banking valuation gives you the analysis of the marketability of the product. And when we say analysis of the marketability, if we introduce the term IVS, then what IVS do or help to the marketability of product. See, now companies coming up use the software and hardware to develop. In valuation also, there are automated valuation models. You give the data and they will give you the report and they will give you the market value, fair value, whatever it is. So, whether we should adopt from this automatic valuation models or we should mechanical or we should stick back to our old calcium method, it's a debate. I think valuation standards should throw light on this or whether we should go for hybrid. This is one point. Number two is environmental issues and social governance issues. See, what valuation we do for banking space, because today the topic of banking valuation, we do not have anything which support the environment. We do not do anything for the environment. We just see the market value or rather get the land value from the SLR or DLR and get the market value by putting some rates, rates or whatever it is. And then we land the building and we just keep the value. But no environment issue, whether property has to be inside of a burial ground or inside of a river line or inside of a road, it is huge work. These have not been issues that involved in the valuation report. What we do in the banks. But I will say we have to take this issue into concern, the environmental issues. And also, Mr. Das was saying, just before the first speaker, what student value we have predicted or we have done or we have performed, that is the today only. Tomorrow the value may change, of course. And the international valuation standards, if we adopt, it should deal with the long-term value also. But after 1 year, after 2 years, what should be the long-term value? If this international valuation standard should show light on these things, long-term value. And there is the fourth one comes social value. What is social value? You can see India is a socialist country by preamble and also India is a very pluralistic society. You find Hindus, you find Jains, you find Buddhists, you find Christians, you find Muslims, everyone is living and there should be some social value also in the valuation. I think so. And it's also very difficult, the social value. And also data management. How much we should put in the report? This is the last term, data management. How much we should put in the report? The valuation reports, that should be specifically mentioned in the international valuation standard. Otherwise, it will be very difficult to commute or formulate all these parameters. Thank you, sir. थैंक यू सर. दिनेश शर्मा साहब फ्रॉम लखनऊ. शर्मा जी आप आगे. हेलो दिनेश शर्मा जी. हेलो. हाँ शर्मा जी बोलिए. जी नमस्कार. नमस्ते साहब बोलिए. हेलो दिनेश दिनेश शर्मा बोले ना. जी. Dinesh Sharma is someone, so there is some other Dinesh Sharma also. But myself is Dinesh Sharma. One Dinesh Sharma is from Agra. तो वो तो 3 शर्मा हमारा मेंबर 3 शर्मा है. नहीं दिनेश नाथ शर्मा आज के हमारा चीफ गेस्ट स्पीकर है, तो शर्मा जी कहेंगे तो ही चल जाएगा. नहीं ठीक है सर, वो उसकी बात नहीं है. सर ये मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोग?
Please continue. Okay. तो नमस्कार सभी स्पीकर्स को मेरा जो है नमस्कार, और सभी बैंगलोर बंधु जितने भी हैं पैनल में इस समय देख रहे हैं, हमारे ख्याल से संख्या आज तो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अदर वेबिनार्स। फिर भी जो है हमारे ख्याल से जो नाम रखा है वाई आईवीएस इज डिफिकल्ट, वाई कंप्लायंस विद आईवीएस इज डिफिकल्ट, ये हम लोग एक नेगेटिव जो है इमेज दे रहे हैं। हमने डॉक्टर साहब से कहा भी था कुछ समय पहले कि इस तरह का नाम न रखा, इससे बेहतर हम हमारे ख्याल से, अब आप लोग के जो किए हैं, हमारे ख्याल से माई सेल्फ एज पर माई ओपिनियन इट शुड बी आईवीएस कंप्लायंट वैल्यूएशन रिपोर्ट, इसके ऊपर बोलना है हम लोग को। जहाँ तक मुझे लगता है दिस इज आईवीएस कंप्लायंट वैल्यूएशन रिपोर्ट, इसी के ऊपर बोलना है। इट इज डिफिकल्ट टू prepare IVS compliant valuation report, or it is very easy to prepare a IVS compliant report. We have to talk on this topic only. इस पर हम लोग को देखा जाए एक तरह से तो हम लोग को IVS compliant report है क्या? IVS है क्या? IVS कोई हुआ नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई इस तरह से कोई मेथोडोलॉजी नहीं आईवीएस में दिया हुआ है कि जिसको कि हम लोग फॉलो करेंगे। इसे क्या है, अभी जहाँ पे भी देखा जाए हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है बैंकों में, LIC वगैरह में, वहाँ लिखा हुआ है योर वैल्यूएशन शुड कंप्लाई विद इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। तो आईवीएस पहले हम समझे तो क्या है, आईवीएस कंसिस्ट ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट that must be followed in order to state that valuation was performed in compliance with international valuation standard. Certain aspects of the standard do not direct or mandate any particular course of action. कोई हमको particular कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताता कि आप ऐसा करिए, 2 करिए तो 4 हो जाएगा, या क्या कहते हैं PWD के सिविल रोड को नीचे उससे वैल्यूएशन निकाल दीजिए, ठीक है ना। ये मेथड हम लोग को डिसाइड करना, लेकिन एक प्रॉपर एक और सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हम लोग वैल्यूएशन करें, बट प्रोवाइड फंडामेंटल प्रिंसिपल and concept that must be considered in undertaking a valuation. That means कि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं, करके करें that fundamental principle if we have considered, that means our valuation report is IVS compliant valuation. अब ये देखा जाए फंडामेंटल कौन सा कंसेप्ट है, इसके कोर प्रिंसिपल जो होते हैं एज पर वैल्यूएशन इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन है इथिक्स। सर जी आप है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसके बाद आपकी होगी, इम्पार्शियलिटी, अभी चल रहा लास्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, competency is must, and professionalism to preserve the public trust, so that our profession is trusted, can be considered as a trusted profession. Competency, जो अभी क्या है IVBI ने कर रखा है, CEP ज्वाइन करिए, CEP जो नहीं ज्वाइन करते, जिसे हम लोग AIVA क्या करता है, एवरी सेकंड सैटरडे को कंडक्ट करता है। दिस इज आल्सो एड इन आवर कंप्लीटेंसी। कंप्लायंस, वैल्यूअर मस्ट डिस्क्लोज रिपोर्ट द पब्लिश्ड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, कि हमने कौन सी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को किया है, वैल्यूएशन इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है, इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड तो अभी बना नहीं है, वो अंडर प्रिपरेशन है, जो काफी काम हो चुका है। लेकिन जो है देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
इसमें ICII वालों का उन्होंने एक वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बनाया है, वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ज्यादातर लोग इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। कंप्लायंस के बाद आईवीए IAS कंप्लायंस, उसके बाद बेसिक, मतलब हमारे वैल्यूएशन का जो है कलेक्ट द बेसिस ऑफ द वैल्यू, it prepare for the assignment and follow all the applicable requirement। ये देखा जाए तो बेसिस कंसीडर कर रहे हैं, डेट ऑफ वैल्यू, इफेक्टिव डेट, डेट ऑफ वैल्यूएशन, ये सब मेंशन करना चाहिए। एजेंशंस एंड कंडीशन, हम किसी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं, उसमें 100% डाटा ना हमें मिलता है, ना हमें कुछ न कुछ कमी रहती है, तो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट किस एजेंशन के साथ है और किस कंडीशन के साथ है। फला कंडीशन, if this condition is removed from this my valuation report, it will give us some other result. This also must be taken assumptions and condition. Intended use, ये किसने intended use, valuer must disclose report in the clear and accurate description of the intended use of the valuation. इंटेंडेड यूजर, इसका यूजर कौन होगा ये भी हमें डिस्क्लोज, ये जो है एक कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन है जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कहता है। स्कोप ऑफ द को छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुमको नहीं स्कोप ऑफ द क्लियर कर, आइडेंटिफाई करें और डिटेल मेजरमेंट लें, डिटेल में जो भी है स्टडी करें, डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, डिटेल में जो है पूरा उसका एनालिसिस करें। This is the next is data। क्या है कि डाटा जो है valuer must use appropriate information and data inputs in clear and transparent manner so as to provide a credible valuation। Data, this is the main problem। Bankers don't provide the proper data and expect that we should give him a valuation report which is compliant with the international valuation standard। If data is not provided, then how we can prepare valuation compliant with IVS valuation methodology। इसको डिटेल में डिस्कस हमारे ख्याल से अपने रिपोर्ट में करना चाहिए, जिसकी वजह से कि हम किस मेथड से हमें क्या डाटा मिला, इसकी वजह से हमारे पर्पज क्या है, इस वजह से वो पर्पज और बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, इसको कंसीडर करते हुए कौन सी मेथोडोलॉजी में वैल्यूएशन किया गया है, इस वैल्यूएशन में ये सब भी डिटेल में देना। कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूएशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वैल्यूएशन रिपोर्ट। Every question must have answer in our valuation report। I won't be present physically at anywhere। If any question being asked by a banker or our valuation user, its answer must be within our valuation report। This is the most important part। हमारा जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट इस तरह से होना चाहिए कि उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब उसमें होना चाहिए, और ये जितने भी 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है रिगार्ड लिखूं, ये यदि हम प्रिपेयर करते हैं, एक IAS कंप्लाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर करने में इनको ये कंसीडर कर रहे हैं, देन दैट मीन्स कि इट इज कंप्लाइंट विद द इंटरनेशनल वैल्यूएशन रिपोर्ट। Record keeping, valuer must keep a copy of valuation and record of valuation work performed for an appropriate period for completion after the completion। अभी तो 3 साल के लिए है, 3 साल तक valuer को रखना पड़ता है रिपोर्ट, और या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ है, उसमें देना पड़ता है। अदरवाइज जो है 3 साल के लिए कहा गया है कि बेसिकली आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप अपने वैल्यूएशन को डिफेंड कर सकें। ये तो पार्ट हो गया कि हमारी IAS कंप्लाइंट रिपोर्ट में क्या करें हम कि IAS कंप्लाइंट रिपोर्ट बन जाए। अब इसको देखा जाए एक तरह से, तो वो उस पार्ट पे आ जाते हैं, चैलेंजेस इन द कंडक्टिंग ऑफ IAS कंप्लाइंट वैल्यूएशन। फर्स्ट इज
most important, lack of input data for analysis. आई क्या करता है, आपको रजिस्ट्री की कॉपी दिखाता है, कहता है भैया फोटो खींच लीजिए उसका. They don't even provide a copy of that cell. फोटो खींच लीजिए भैया, प्रूफ बैग की कॉपी यहाँ नहीं है, अभी कल आएगी, आप लिख दीजिएगा, देख या देखना होगा देख लीजिएगा, लेकिन आपको कॉपी नहीं देंगे. इसीलिए लायक आप जैसे LIC हाउसिंग है, आप गौर करें, LIC हाउसिंग में रिटेल का जो है लोन होता है उसमें रजिस्ट्री तक नहीं देते. रजिस्ट्री से आपको डाटा कागज में अब थोड़ा खैर हम लोगों ने अभी RTI वगैरह डाला था, इसके बाद अब LIC हाउसिंग जो है रजिस्ट्री की कॉपी शेयर करने लगा है. वो भी शेयर क्या करता है, एजेंट के थ्रू होता है, उसमें कुछ पेजेस शेयर हो जाते हैं, फुल रजिस्ट्री शेयर नहीं होती है. तो उसी तरह से बैंक भी है, बैंक में भी 100% हमारे ख्याल से जो है इनपुट डाटा अवेलेबल नहीं होता है जिसको कि हम एनालाइज कर सकते हैं. यदि हमारे पास डाटा ही नहीं है, इनपुट डाटा हमको नहीं मिल रहा है, तो हम उसको एनालाइज कैसे करें. IBS कंप्लाइंट रिपोर्ट बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर इनपुट डाटा है. सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो इनपुट डाटा मान लीजिए हमको मिल भी जाता है, लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड डाटा बैंक. लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड डाटा बैंक. डाटा बैंक क्या है, हमारे पास ऐसा कोई इस तरह से आने वाले समय में हमारे ख्याल से डाटा बैंक तैयार हो रहा है. आने वाले समय में शायद हम लोग को हम बैंकर्स को भी मदद मिलेगा इस डाटा बैंक से. कुछ मान लीजिए कोई रजिस्ट्री आपको चेक करनी है, अभी तो खैर IGRS पे जाइए तो आपको हर एरिया का कुछ न कुछ कहीं कहीं मिल जाता है. कंपेरिजन, सेल कंपेरिजन यदि आप किसी से करना चाहते हैं तो आप मिल जाएगा, लेकिन उस डाटा को ले करके हम उसी से डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते. उस डाटा के साथ में उस प्रॉपर्टी को विजिट कर लिया और अपनी प्रॉपर्टी से उसको कंपेयर करते हुए तब आप रेट प्लस माइनस जो भी करना हो कर सकते. तो डाटा बैंक जो कि अवेलेबल अभी प्रॉपर वे में नहीं है अपने पास, ये इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि IBS कंप्लाइंट रिपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम है. चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी. चैलेंज जो है अपने इस IBS कंप्लाइंट रिपोर्ट बनाने के लिए, इसमें चैलेंज है ग्रेडिंग ऑफ बैंकर्स. अभी क्या है, बैंकर्स क्या काम करता है कि जूनियर बैंकर है जो कि अभी इम्पायरमेंट हुआ है, इस साल हुआ है, व्हाट बैंकर वांट्स व्हाट दे वांट, वी शुड राइट इन हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट और वी शुड राइट हिज लैंग्वेज इन वैल्यूएशन रिपोर्ट. बट लेकिन अभी क्या है कि सीनियर वैल्यूअर जो है वो इस तरह से, हमको नहीं लगता कि कोई सीनियर वैल्यूअर इस तरह से करते होंगे कि जो बैंकर चाह रहा है वही लिखते. सीनियर वैल्यूअर वही लिखेगा जो इथिकली लिख सकता है. वो तो ये ग्रेडिंग जो है नहीं है, जिसमें कि क्या होता है कि उस चक्कर में क्या होता है, वो जूनियर वैल्यूअर जो है जो कि आपको साल 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, वो मैक्सिमम वर्क बैंक का वो ले जाता है. एक सीनियर आदमी बैठा बैठा देखता रहता है कि वो बंदा कमा रहा है, यार वो 5 लाख कमा रहा है, हमको 50,000 देता है, ये भी देखता रहता है. ग्रेडिंग का भी बहुत असर है. देखा जाए इशू ऑफ लोवेस्ट क्या है, आप RSCPC में जाए, 2,000 रुपए की वैल्यूएशन करा रहे हैं, आप वही वैल्यूएशन कहीं और करते हैं या कुछ और करते हैं, हो सकता है 2,000 मिलेगा 20,000 मिले, तो आप 2,000 पे हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट in 2,000 fees and valuer can give a lot of there is a lot of requirement for preparation of IBS valuation report. So how we can prepare in 2,000 report 2,000 rupees fees, how we can do this? तो इसी में नहीं है. अभी देखा जाए तो हमारे IVDI के वैल्यूअर्स जो है, हम लोग जो कोटेशन दे रहे हैं किसी कंपनी का डालते हैं, पता चला हम डाल रहे हैं 50,000 रुपए, सामने वाला बंदा डाल देता है 15,000 रुपए. सो मच ऑफ ह्यूज डिफरेंस.
अभी क्या है, आरबीआई का पिछले साल निकला था, टेंडर आया था, उसमें कुछ लोगों ने 2 लाख भरा था, कुछ लोगों ने 1.5 लाख भरा था, 1,38,000, मतलब 1.5 लाख के ऊपर ही लोग, ज्यादातर लोग भरे थे, लेकिन 2 वैल्यूअर ऐसे थे जिन्होंने 49,000 भरा था। एक में शायद 62 या 68 जो भी भरा था। तो ये बताइए, इतना 2 लाख और 49,000, हाउ यू कैन डू justice in your valuation report? You cannot do a justification. It is not the question of village doctor and city doctor. Village doctor charges only 10 rupees for his one pudiya, and city doctor charges 1,000 for 5 minutes, 10 minutes. So you cannot compare with that. If you want to provide a justice in your prepare a valuation report, with justification, you have to pay, bankers have to pay proper fees, and valuers have to charge proper fees. This is also must. Cost of capacity building and infrastructure development. हम क्या है कि कंपेयर करने के लिए एक बंदे ने बनाया 4 ऑफिस, 4 सिटी में 10, 5 सिटी में 10 सिटी में, पूरे इंडिया भर में ऑफिस बना रखा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसकी भी तो कॉस्ट इसमें जोड़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो आप कॉस्ट जोड़िए। ये सब जोड़ा जाए तो देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग गैर आरबीएस कंप्लाइंट रिपोर्ट बनाने में इसका भी बहुत रोल है। इसमें प्रॉपर यदि आपका वो है, ये सब कंसीडर करते हुए किया जाए तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। चैलेंजेस ड्यू टू डिले फीस और नो फीस। अभी क्या होता है, आरबीएस कंप्लाइंट में बना रिपोर्ट तो हम बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हमने क्या काम किया, साइड से 2-3 साइड से ले लिया, मान लीजिए 99 एकड़ से रेट ले आए, मान लीजिए अब क्या कहते हैं कि मैजिक ब्रिक से रेट ले आए। लोगों ने अभी हमारे पहले जो स्पीकर साहब थे उन्होंने कहा कि वो सही नहीं होता। ये वैल्यूअर्स तो सब वैल्यूअर जानते हैं कि वो सही नहीं होता, लेकिन उसको सही करना हम ही वैल्यूअर्स का काम है। उसमें जो भी रेट है और अपनी प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी जो भी है, दोनों को एनालाइज करके एक प्रॉपर रेट पर, एक सही रेट पर हम लोग आए। दैट इज द चैलेंज। तो क्या है कि फीस मिलती है, किसी किसी केस में फीस मिलता ही नहीं, तो आप आरबीएस वैल्यूएशन रिपोर्ट बना करके क्या मिलेगा आपको? अब आप बताओ, इतना मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी वैल्यू कम आई है, पता चला बैंक वाला कहेगा हम दूसरे वैल्यूएस करा लेंगे, आपको और नहीं देते हैं। इसलिए प्रॉपर वे में यदि आप लीगल वे में काम करें तो हर एक चीज का एक प्रूफ क्लियर रहा करिए। आपको केस अलर्ट हुआ, एक प्रूफ होना चाहिए। मेल डाल दो भैया, एक मेल डाल दीजिए। आपने रिपोर्ट दिया, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्या मेल डाल दो भैया, सो दैट यू कैन क्लेम द योर फीस। अब लीगल चैलेंज देखा जाए तो क्या होता है, कास्ट ऑफ इंडेंटिटी बॉन्ड। आपने जो है क्या आनंद फानन में 2,000 रुपए की वैल्यूएशन को आप आनंद फानन में बना करके किसी तरह से दे दिए और आप भरे हुए हैं इंडेंटिटी बॉन्ड, वो कास्ट भी जोड़ लीजिए आप। उस कास्ट को यदि इसमें जोड़ लेंगे तो आप लोग ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे नहीं कि जो रिपोर्ट आईएएस कंप्लाइंट ना हो। उसको मना कर देंगे भैया ये वैल्यूएशन नहीं करेंगे। हमको स्टेट बैंक से, मैं बता रहा हूँ, मुझको स्टेट बैंक से एक केस आया जो कि एक कचरा खतौनी का जो है प्रॉपर्टी थी, और दैट वाज ए लार्जर लोन, मोर देन 50 करोड़। तो उसमें उन्होंने कहा इसकी वैल्यूएशन कर दीजिए। हमने कहा सर इसका हमको ये पेपर, हमने पेपर बता दिए, उनका आइडेंटिफिकेशन का कोई पेपर दीजिए, सोसाइटी में नॉन रेगुलेटेड एरिया है। हाउ वी कैन से दैट आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉपर प्रॉपर्टी? नॉन रेगुलेटेड एरिया में कोई भी प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई वैल्यूअर कर सकता है, दैट इज इट।
ओन ओन। तो आप ये मेमोरी बांध भरे हैं कि आज नहीं आपको, कल नहीं, ये परसों नहीं, ये नरसों नहीं, एक दिन आपको ये आपकी जितनी अर्निंग है वो सब खा जाएगी। जो आपने सेविंग किया है पिछले साल में, जो आपके बच्चे कमा रहे होंगे वो भी ले लेगा। पहली बात तो इसी मेमोरी बांध का भी देखा जाए। दूसरा है बर्डन ऑफ क्लेम्स। क्या होता है, एनपीओ हो जाता है केस, वो कहते हैं कि भाई फला डेट में आपने वैल्यूएशन किया था, इसकी रिपोर्ट भी है, जो फला डेट में आपने वैल्यूएशन किया था उसकी वैल्यू तो आज है ही नहीं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंकर्स कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कल को 10 करोड़ था, आज को 5 ही करोड़ था। अरे हम तो कह रहे हैं 1 ही करोड़ मिलेगा, क्योंकि उस दिन की उस कंडीशन की वो उसमें क्या प्रॉपर्टी थी, क्या एसेट थे, क्या फिक्स एसेट था उस पर। आपको मान लीजिए 3 सेट था, उसमें मान लीजिए सेट थे, स्ट्रक्चर थे, वेयर हाउस था, उसने स्ट्रक्चर को दायर कर दिया, तो बेचो कहाँ से पा जाओगे। ये कंडीशन देखता नहीं कोई, और बैंकर से ऊपर से ब्लेम करते हैं कि वो आपने जो है 25 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ की वैल्यूएशन दिए थे, आज की डेट में 25 करोड़ दिए। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कास्ट ऑफ जस्टिफाइंग ओन रिपोर्ट, मतलब हम अपनी रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हम बैंकर के पास जाएंगे, उसको समझाएंगे, ये करेंगे, उसकी कोई फीस मिल रही है क्या? ये लीगल वे में देखा जाए तो ये 2 चेंजेस है। ये हमारे ख्याल से आईपीएस कंप्लाइंट रिपोर्ट बनाने में मेन जो देखा जाए बाधक तो है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, मेन जो है बाधक तो है हमारे जो है यही है। ये कास्ट ऑफ इंडियन ये करा देता है, जो आज तक कुछ लोग जो है क्राइम करके चुपचाप चले आ रहे हैं, कहते अरे हमने तो देखा नहीं कि उसमें इंटरव्यू बांध नहीं था। दिस इज नॉट गुड फॉर आवर प्रोफेशन, दिस इज नॉट गुड फॉर बिहेवियर ऑफ दैट प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ दैट वैल्यूअर। दिस इज नॉट द एथिकल वैल्यूअर, ही इज नॉट एथिकल वैल्यूअर। So we must prepare a valuation report which is compliant with the international valuation report. It is kindly prepared, बशर्ते कि input data हो, बशर्ते कि we analyze all the legal or all the analytical, or we follow the Indian international valuation standards, norms, ये फॉलो करते हैं तो प्रिपेयर किया जा सकता है, बशर्ते भी है इनपुट डाटा एंड डाटा फाइल। और ये देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, प्रिपेयर किया जा सकता है। और हम तो जितने भी बैंक के काम कर रहे हैं उसमें कोशिश करते हैं, इसके हम कोई चीज हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, मान लीजिए दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट यू मस्ट फॉलो दिस आल्सो। You should write the conditions, exemptions and conditions that I have not, this data, this input data has been not provided by the owner, so I couldn't, why I was not able to consider that as we must write each and everything. This is my presentation on IBS valuation report, IBS compliant valuation report, which is where is the problem, main problem for preparation of IBS compliant reports. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो नागपुर से है, उनका मम्मी का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट करके आए। आज चांस की बात ऐसे ही है, सबकी तबीयत खराब रहती है। दास साहब भोपाल से, वो भी मिसेस के साथ डॉक्टर पास थे, प्रवीण जी मम्मी के साथ थे। अभी जो हमारा देहरादून वाले, उनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो नहीं जान कर पा रहे। उन्होंने कुछ राइटअप भेजा, मैं पढ़ सुना दूंगा। तो मैं प्रवीण से कहूँगा कि हम बड़े दुख सर कहते हैं, उनका माता जी को भी हॉस्पिटल एडमिट करके आए हुए हैं, तो हम बड़े दुख प्रकट करते हैं।
फिर भी आपने आया हमारा ज्वाइन करने के लिए, आपको धन्यवाद। प्लीज आप जस्ट मोमेंट लोग ज्वाइन तो कर लेते, जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना ठीक ही है। चलो ठीक है। तो सर इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, सबसे पहले तो बेसिक इसके ऊपर जाते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, और हम लोग प्रोफेशनल हैं तो हम लोग ये टेंडर की प्रोसेस में क्यों जा रहे हैं, मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा। मेरा तो बेसिक यहाँ से शुरुआत होता है कि आप सब लोग इसमें ये करोगे, एक्सेप्ट करोगे, हम लोग प्रोफेशनल है। सर प्रोफेशनल है, लेकिन यदि आपको बैंकिंग आईबीसी की जो है जितनी भी वैल्यूएशन है, इंसॉल्वेंसी की जो भी वैल्यूएशन है, वो टेंडर के थ्रू ही मिलता है। सर हम लोग टेंडर में मान लीजिए मेरा बेसिक सवाल है, टेंडर तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है, क्या हम कॉन्ट्रैक्टर है? नहीं, अभी आप सर्विस प्रोवाइडर। Then why should we accept the tender? If service provider, if there is a 10 service provider, मेरे को बताइए, यदि आईवीपीआई ने या बैंकर्स ने कोई चीज जबरदस्ती हमको डाल दिया है टेंडर्स में, तो क्या हमने एक्सेप्ट करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। हम विरोध कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और हमने उसको ऑल इंडिया लेवल पे विरोध करना चाहिए। और ये सबसे पहले टेंडर सिस्टम हट जाएंगी तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, ये मेरा कहना है। अभी आप गौर करिए, जो मान लीजिए बैंक की भी वैल्यूएशन होती है सर जी प्रवीण जी, हमारे मान लीजिए बैंक की वैल्यूएशन है कोई, वो बहुत बड़ी है वैल्यूएशन, बराबर। तो उसमें आपको जो मिलेगा, बैंक में मान लीजिए सीनियर वैल्यूएशन 2 या 3 है, तो वो दोनों तीनों का ही टेंडर से ही मिलेगा, जो स्मॉलेस्ट होगा उसी को मिलेगा। टेंडर नहीं मिलना चाहिए, हाँ डिस्कशन होना चाहिए, निगोशिएशन होना चाहिए। टेंडर इज नॉट अ वे। ये L1 है क्या, हम लोग को L1 में काम करना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है हमेशा। दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्टर, दिस इज प्रोफेशनल सर्विस, एंड वी आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विस, वी शुड एक्ट लाइक दैट। दैट इज व्हाट आई से। और इसके लिए हमने सबसे पहले बैंकर्स से लेके तो आईबीपीआई से लेके सबको लिखना चाहिए कि वी आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर्स, वी आर सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनल एंड ट्रीट अस एज अ प्रोफेशनल। यदि हम लोग प्रोफेशनल को ट्रीट कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं कर सकते। तो फीस कैसे लेंगे हम? 2000 लेंगे। फीस क्यों लेंगे? एक बार हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हम लोग डिमांड करेंगे क्या फीस देना है। ऐसा तो बोला नहीं है कि 2000 में काम करो। तो बिकॉज वो एडवांस से ज्यादा दे ही नहीं रहा है स्टेट बैंक नहीं दे रहा है, बाकी भी बैंक कम करते आ रही है, बट वी शुड फाइट इट ना। हाँ, वी शुड फाइट इट। दिस इज द राइट वे। आज मेरे को 2000 में काम करूंगा, बोलता नहीं करूंगा मैं, कोई तो कर देता है। मैं तो ये नहीं बोल रहा नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं सर ये मेरा ख्याल आज तक नहीं किया सर जी, किसी का एक सिंगल वैल्यूएशन नहीं किया। ऐसे किसी को तो मैं बोल दिया कि मेरे का है लड़ रहे हो भाई। सर मेरे ख्याल में ओपन डिस्कशन में करेंगे। आपको कोई टॉपिक और बोलनी है प्रवीण जी, आप बताइए। बताइए ना प्रवीण जी, आपको कुछ और बोलना बताइए। अरे भारत एसोसिएट वगैरह तो तुमको 1500 में दे देंगे, 500 रुपए में दे देंगे, क्या लड़ रहे हो? 500 में करते हैं, 1000 में भी करते हैं, बट टेंडर किसी के लिए हो सकता है। आप इंडिविजुअली नहीं लड़ रहे हैं ना, आप इंडिविजुअली लड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो हम लोग ये जो फोरम है अपना ऑल इंडिया इसमें से हम लोग सही रहेगा। प्रवीण जी, आपको कोई टॉपिक को अप्लाई करने के लिए तो मैं भी यही मानता हूँ कि उसके जो डाटा चाहिए आज के तारीख में है नहीं, और हम लोग लिख तो रहे हैं बट इट इज नॉट करेक्ट। और यदि हमको उसको सेटिस्फाई करना है तो काफी दिक्कतें जाएंगी आगे में। उसके यदि डाटा पैक हो जाता है तो ट्राई फॉर दैट। ठीक, आईएएस कंप्लायंट रिपोर्ट लिख दिए हैं हम, तो हम एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। जब तक डिस्कशन हुआ है इतने पॉइंट से हम फॉलो नहीं किए हैं तो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक सर, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट आ जाए, हम एक ही बोलना चाह रहे हैं कि टेंडर किसी के लिए भी हो सकता है, टेंडर इशू नहीं।
जी जी टेंडर की कोई मतलब मायने नहीं। बेसिक है सर, टेंडर के लिए अपने अपोज करना ही चाहिए, टेंडर हमारे लिए लागू नहीं हो सकता। क्या एक किलो से आ जाए। सर सर एक मिनट सुना सर लेना। सर मेरे मैंने बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब हमारे, जितने जितने बैंक के मैनेजर हमारे सेक्रेटरी बने घूम रहे हैं पर्सनल, तो हमारे फ्लैट फिक्स कर रहे हैं ना, तो फिर आप टेंडर ज्यादा बेटर है कि पर्सनल असिस्टेंट जो हमारा फ्लैट फिक्स कर रहा है। मेरे ख्याल में शेखर अभी थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि जो टॉपिक खत्म हो जाए, एक हमारा टॉपिक वहां से देहरादून से आई है, वो हम पढ़ेंगे। ओपी वर्मा साहब हम परमिट करें, मेरा तो नाम नहीं था, 2 बात हम भी कहेंगे, फिर ओपी वर्मा कंक्लूजन, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिस्कशन करने के लिए। तो मैं साहब वर्मा जी पूछा और ड्यू परमिशन, क्यों मेरा नाम नहीं था लिस्ट में, तो 2 मिनट हम भी थोड़ी बोल देना चाहते हैं। तो सर एक्चुअली जो हम आईवीएस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, हम अभी हमारा कहना था कि हम अभी इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड हम अभी आए नहीं। हम प्रॉपर्टी जो वैल्यूएशन करते हैं, सबसे पहला काम होता है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन की। तो क्या हम प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? अगर गवर्नमेंट, हम सरकार को ये लिखें कि आप जो प्राइवेट बिल्डर प्राइवेट डेवलपर हैं, बिना प्रॉपर्टी बिना अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान करते हुए जो प्लॉटिंग करे बेच रहे हैं, उनको रोकी जाए, तो सबसे पहला जो सरदर्द हम लोग होती है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, ये दूर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ओपी वर्मा से हमारे कॉन्फ्रेंस स्पीच देंगे, तो उनका बेस पे हम इसको गवर्नमेंट को लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टी हम हर वैल्यूअर को होती है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सरकार को, मतलब अथॉरिटी को लिखें कि आप अपने अपने शहर में प्राइवेट बिल्डर को बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूव करके प्लॉटिंग करके न दे, और बैंक को लिखें कि इसको आप फाइनेंस न करें, तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का काम खत्म हो जाएगी। जो हम आईवीएस का बात कर रहे हैं, इंडिया में फॉरेन कंट्री में मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता, कि मैं फॉरेन कंट्री का वैल्यूएशन किया नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल फॉरेन कंट्री ऐसा नहीं होती कि प्राइवेट बैंक 2 बीघा जमीन खरीद लिया, आप प्लॉटिंग करके बेच के चला गया, ये वहां नहीं होती है। तो इसलिए वहां पे आईवीएस एप्लीकेबल होगी, हमारे एप्लीकेबल तब तक नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट ये न तय करे कि हम कोई भी जमीन बिना प्लॉटिंग बिना ऑथोरिटी प्लॉटिंग करके हम किसी को न बेचे। तो ये रहा सबसे पहला काम, प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सबसे दिक्कत सबसे बड़ी और आती है वेरिफिकेशन ऑफ डायमेंशन। आप अगर देखेंगे जो छोटे छोटे कस्बा में, अगर उनका 20 बाय 100 का प्लॉट है, वो 20 बाय 25 का रजिस्ट्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों स्टाम्प को बचा को करने के लिए, स्टाम्प ड्यूटी देना न पड़े, वो 20 का 25 का रजिस्ट्री करते हैं। बाकी 75 फुट का जो प्लॉटिंग है वो खाली चला आता है, बिल्डिंग बना होता है उसको, तो उसके नजर में बिल्डिंग बना 20 है 80 में या 75 में, रजिस्ट्री उसका 20 है 25 में। होता क्या उसमें, उसका बाउंड्री वेरीफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हम अगर मान लीजिए फ्रंट पे रोड हो गया, बैक में किसी और का मकान है, लेकिन जबकि इसका मकान के पार्ट उसके बाद दूसरे मकान होगी। तो ये चीजें जनरली दिक्कत होती है आइडेंटिफिकेशन मतलब डायमेंशन ऑफ प्रॉपर्टी में। तो ये भी हम अथॉरिटी को लिखना चाहें, हम कह रहे हैं कि कंक्लूजन में ओपी वर्मा साहब कहेंगे, तो वो जैसे हमको सजेशन देंगे, हम इसको गवर्नमेंट अथॉरिटी लिखनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री होती है, जो प्रॉपर्टी का डायमेंशन है उतना का रजिस्ट्री हो, उसे कम ना हो। अगर कम हो तो बैंक उसको एंटरटेन न करे। ये जो तुम्हारा डायमेंशन जब तक वेरीफाई हो जाएगी, तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो है, और देखें लैंड रेट, मतलब पहले आइडेंटिफिकेशन किया, फिर डायमेंशन वेरीफाई किया, फिर असेसमेंट लैंड रेट। अभी लैंड रेट में अभी स्टेट बैंक का बड़ी कहानी थी कि वो कह रहा था कि अगर मार्केट रेट 20% डीएम रेट से ज्यादा होती है, तो आपको जवाब दे यहाँ पे कि आप जवाब दो कहां से रिपोर्ट लाए, कहां से रेट लाए, कहां से रेट आएगी। 4 साल से आप डीएम रेट बढ़ाए नहीं हो, और उसके पीछे पब्लिक का शिकायत है कि डीएम रेट न बढ़े, वजह क्या है? मतलब हो सकता हम आपको सही हो ना हो, लेकिन जो पब्लिक का नजर में आपको बता रहा हूं, अभी इंडिया में सड़कें बहुत बन रही है, अगर डीएम रेट बढ़ जाएगी तो सड़कों का जो पेमेंट किसानों को होगी, किसी को देनी होगी, बहुत सारा देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के सरकार डीएम रेट बढ़ा रही है, पब्लिक कहना है, हमारा नहीं कहना है। तो अगर ये सोच है कि 4-5 साल से अब डीएम रेट कोई भी इंडिया में कहीं पे बढ़ी नहीं है, तो क्या मार्केट रेट नहीं बढ़ा हुआ? तो स्टेट बैंक ये कह रहा है कि 20% अगर ज्यादा होगी तो वैल्यूर को दे, कंपनी दे, कहां से लाएगा वैल्यूर, कहां से ले आएगा? ऐसा 99 जाओ कहीं जाओ, वो रेट कहीं कुछ मिलती नहीं है। तो ये जो रेट है उसका जो व्हाइट मनी ब्लैक मनी, फॉरेन कंट्री में व्हाइट मनी ब्लैक मनी होती नहीं है, तो इसलिए वहां पे इंटरनेशनल आईवीएस स्टैंडर्ड लागू हो सकती है, इंडिया में नहीं लागू हो सकती है। दूसरी बात, जो मेजरमेंट है, यूनिट कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे हम जमीन का बीघा में मान नापते हैं, हम उड़ीसा में माणों में नापते हैं, यहाँ बीघा में 20 बिस्वा भी होता है। आप विश्वास नहीं माने, कानपुर और उन्नाव दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां एक बिस्वा 102 मीटर का होता है कानपुर में, और 105 या 106 मीटर होती है उन्नाव में, जबकि अगल बगल डिस्ट्रिक्ट है, गंगा नदी पार कर उन्नाव है।
हम अपने जमीन का, अपने लैंड का मेजरमेंट, उसका यूनिट, उसका कन्वर्सन हम सही नहीं कर पा रहे। इंडिया में हम बात करें आईवीएस की, तो सबसे पहले ये जितना बातें हैं ये सरकार को तय करनी चाहिए। आप मान लीजिए हम इतना बड़े हुए, हमारा माँ बाप ने दिखाया कि वो फलाना हमारा घर है, प्रभु है, उनका हाथ जोड़ो, हमको अपने माँ बाप ने सिखाया तो ही हम चले। अगर हमको न सिखा तो हम क्या चलते। तो इसलिए अगर हम इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमको मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें। कोई भी अराजी खेती पे प्लॉटिंग न करे, ना उसको फाइनेंस करे, और आगे का हिस्सा रजिस्ट्री करना, पीछे नहीं करें, उस पर कंट्रोल करें। ये जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम अपना आईवीएस के हिसाब से रिपोर्ट दे ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार की है। सरकार इस पहल पे जाए और ये जो कमियां उसको दूर करें, और वो तब हमसे उम्मीद करें कि ये वैल्यूर आईवीएस स्टैंडर्ड पे वैल्यूएशन रिपोर्ट दे सकता है। अगर हम नहीं देंगे तो आप हमसे कहिए, आप तो बेसिक फॉर्मेलिटी, बेसिक रिकॉर्ड हम पूरा करके नहीं दे रहे और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि आईवीएस वैल्यूएशन करें। तो ये बेवकूफी, हम सब होशियार है, हम चाहते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज हो तो अच्छी बात है भाई। अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर पूरा वर्ल्ड स्टैंडर्ड, कोई मना थोड़ी करता, अच्छा बात है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए स्टेज तैयार कौन करेगा? सरकार करेगा। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए और आश्वासन तरफ से, ये हर आश्वासन ऑल ओवर इंडिया में ये पूरा सरकार को, हर डिपार्टमेंट को चिट्ठी देना चाहिए कि भैया देखो, आप अगर आईवीएस हमसे उम्मीद करने से पहले आप पहले अपना स्टैंडर्डाइज करो। अगर करोगे, अगर हम नहीं देंगे तो हमको पूछो क्यों नहीं कर रहे, वो तब तक हम नहीं कर पाएंगे। ये सभी आश्वासन को, मतलब सभी आश्वासन सरकार को ये लिखना चाहिए। मैं ओपी वर्मा साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज टेक्निकल का अपना हेड आज है, तो वो अपना कंक्लूजन स्पीच में ये हम सबको बताएं और हमारे आईवा को एड्रेस करके ये लिखें कि हमें सरकार को क्या क्या प्रपोजल दें, ताकि हमें इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये छोटी बात मेरा कहना है। तो बाकी जब ओपन डिसीजन फाइनल करेंगे, एक हमारा मित्र हमारा बड़ी सीनियर है देहरादून से, उन्होंने 2 पन्ना लिखा। मैं थोड़ी सी 2 पारा खाली पढ़ के सुना दूंगा, नहीं तो उनका मन खराब होगा। उनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास है, तो उन्होंने 2 पारा खाली पढ़ के सुनाता उनका। ये तो 2 पन्ने का है, 2 पारा खाली पढ़ाता हूँ। द वैल्यूअर मस्ट यूज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड डाटा इनपुट्स इन ए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर टू प्रोवाइड ए क्रेडिबल वैल्यूएशन, बट इन आवर कंट्री this is very very difficult to find correct data. For example, circulates of land does not match the actual market rates prevailing in open market. There is no authentic way to verify market rates except inquiry with local people or property agents. I must say that in Indian valuation profession is not a organized sector. Due to parallel economy, it is difficult to find out correct data, which leads to faulty valuation. So, in my opinion, before adopting IVS, first of all, a regulatory body to control valuation activities must be formed, and efforts should be made to regulate valuation professions in an organized way. Another major drawback in Indian scenario is no clear fee structure. Especially in banks, fee is reduced day by day, and on the other hand, valuer is expected to work on those points which should not be in his purview. This affects the quality of valuation. Most of the banks are demanding indemnity bonds, which clearly means that bank officials are shifting their responsibility on valuer soldiers. These are some important points he had mentioned. अगर ना पढ़ते तो उनका मन खराब होता, तो ये उनका राइट ऑफ है और नहीं आ पाए उसको दुख प्रकट किए, लेकिन पढ़ के सुना दिया। ये उनका टॉपिक है। अच्छा लिखा है जी सर। तो ओपी वर्मा सर, आप फिर आप कंक्लूडिंग में हमारे respected नंदा जी एशियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, माय डियर colleague, friends, everyone. आज हमने हमारे चीफ स्पीकर प्लस हमारे प्रेसिडेंट राज साहब और हमारे देहरादून के डॉक्टर वैल्यूअर, उन सबकी राय सुनी है। इसलिए मैं 2 लाइन में ही सबसे बता पाऊंगा कि थोड़ा जो मैं नोट कर पाया हूँ, इसमें अच्छा बोला है, इसमें भी जोड़ा नहीं, पढ़ने का भी डिटेल बोला है, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से जो थोड़ा बहुत नोट कर पाया हूँ, तो जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले दास साहब हमारे भोपाल के वैल्यूअर हैं, के वैल्यूअर हैं। उनका कहना है कि आईवीएस का लीगल स्टेटस जो है
इट इज एन एडवाइजरी ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं, एडवाइजरी ही है, क्योंकि अभी तक कोई हमारे यहाँ से वैल्यूअर एक्ट या वैल्यूअर द्वारा पास हुआ नहीं। तो हम दो ही कानूनों से ध्वन हो रहे हैं, या तो वेल्थ टैक्स एक्ट जिसमें हमारे आइवा के मेंबर्स हैं, और दूसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो हम आईवीजे थ्रू हो रहे हैं। तो आईवीजे वैल्यूअर्स के लिए तो मैंडेटरी है आईवीएस को फॉलो करना, और जो हमारे मेन जो हमें काम देते हैं वो तो बैंक ही देते हैं, और बैंकों की ऑलमोस्ट सभी की जो गाइडलाइंस है वो सभी कहते हैं कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है वो आईवीएस कंप्लायंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा राम गोपाल शर्मा जी झारखंड से थे, वो उनका मुख्य जो टॉपिक था जिससे उनका कंसंट्रेशन था वो था कि भाई जो हम प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूशन कर रहे हैं वो सही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब जिसके हम प्रॉपर्टी की वैल्यूशन अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, क्लाइंट हमारा बैंक है या कोई भी है, तो वो वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी हम वैल्यूशन दे रहे हैं, जिसको किसी को देते हैं, मतलब उसके टाइटल डॉक्यूमेंट से हो, उसका आइडेंटिफिकेशन भी हमने इशू कर दिया हो। मेन उनका उद्देश्य ये था कि उसमें इश्यू जो आते हैं उसको अवॉइड होना चाहिए, उसमें अगर गलती होने की संभावना कम से कम होनी चाहिए। रामगोपाल शर्मा जी मेरे ख्याल में ठीक बोल रहा हूँ, शर्मा जी यही आपका कंसर्न है सर? शर्मा जी, हाँ सर, शर्मा जी कुछ आप पूछ। आपका यही कंसर्न था कि हम ताकि हमारे आइडेंटिफिकेशन के रिस्क न रहे, यही मेन कहना कि हम जो राइट प्रॉपर्टी को वैल्यू करें ताकि उसका टाइटल ठीक हो, उसका आइडेंटिफिकेशन ओके हो। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद में सर मेरे कहने का मतलब है कि जैसे दिनेश जी प्रवीण जी तो बोले कि हमको डॉक्यूमेंट सारा दे दीजिए और फी 2000 को ऊपर दे दीजिए, तो आपका मेन कंसंट्रेशन ये है ताकि हम हमारे वैल्यू हाई रिस्क से बने रहें, ताकि हम कोई गलत प्रॉपर्टी की वैल्यू से ना करें, सबके लिए कंसर्न। सर हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि जैसे लोग ओपिनियन अपना दे रहे हैं कि आईबीएस का वैल्यूएशन, आईबीएस कंप्लायंस वैल्यूएशन किया जा सकता है यदि हमको सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें और फी 2000 के बदले 20,000 दे दें या 2 लाख रुपया दे दें, तो हम वैल्यूएशन आईबीएस से कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आईबीएस कंप्लायंस वैल्यूएशन का मीनिंग यही हुआ कि जिस तरह से बैंक में एफडी रख दिया जाता है और एफडी को 5 साल में वो दुगना होना चाहिए और उसके बीच में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, उसको 5 साल के बाद में उतना रिटर्निंग मिलना चाहिए। अब यहाँ मैटर है कि प्रॉपर्टी राइट नहीं है। राइट प्रॉपर्टी का मतलब हमने एक एग्जाम्पल दिया कि आज वैल्यूएशन जो बैंक में किया जाता है, बैंकर्स का कहना है कि आप ऐसा कीजिए ना कि 1000 में 1000 का नक्शा पास है और घर बना है 1500 में, आप 1000 का वैल्यूएशन दीजिए। इस पर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जब 500 स्क्वायर फीट को तीनों तरह से तोड़ दिया जाएगा तो वो बिल्डिंग का वैल्यू का क्या स्टेटस रहेगा, और उसमें यदि वो 5 लाख भी रुपया हमको फी दे देता है, हम आईबीएस को साइन कर देते हैं, तो हमने ऐसी वैल्यूएशन आप यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं जी, आप ऐसी वैल्यूएशन शर्मा जी आप ऐसी वैल्यूएशन कर रहे हैं तो यू आर नॉट एथिकल करेंगे। मेरा कहना ये है, कहने को आप ऐसा कहिए कि आप प्रोफेशनल वे में करिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे मित्तल साहब का कहना है कि वेस्टर्न कंट्री में आईवीएस की कंप्लायंस इजी है क्योंकि बहुत सारा डाटा है, डॉक्यूमेंटेड है, इवन से जो सर्वे नंबर है, प्लॉट नंबर है, लाइक आर कंट्रीज इन द होल कंट्रीज दे आर नंबर्ड, सारे कंट्री में सबकी आप देखते हैं कि गूगल कोऑर्डिनेट से पूरे आइडेंटिफाइड है, तो इसलिए वहाँ आइडेंटिफिकेशन इसकी डाटा जो ट्रांजेक्शन डाटा है वहाँ पे सब ट्रांसपेरेंट है, तो दैट इज पॉसिबल एंड हियर इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन हैं दे आर मोस्टली इन ब्लैक एंड व्हाइट
तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा इसमें काफी दिक्कत आती है। ये हमारे बिल्कुल साफ का कहना था। आइडेंटिफिकेशन इज अनदर इशू, इनका कहना है। फिर हमारे प्रोफेसर मैंने घोषाल जी, he has a very thorough of डाटा, और डाटा है इनके पास, इसमें कोई बुराई नहीं कि he is very conversant with IO, automated evolution methods, and so many things, you can say the standards adopted by the ICAI and some other institutions. तो आपका इसमें कोई बुराई नहीं, प्रोफेसर साहब, you have very good knowledge in the subject. थैंक यू। आपका कहना ये है कि अडॉप्शन से पहले आपका कहना ये है बिफोर अडॉप्शन प्रॉपर ट्रेनिंग मस्ट बी इम्पार्टेड टू द ग्रेजुएट। हमारे दिनेश शर्मा जी लखनऊ के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हम IAS से कंप्लायंस कोर्स बना सकते हैं, काफी हद तक कंप्लायंट हो सकती है, और उसमें कुछ इश्यूज भी हैं। आपको इश्यूज वही है जो हम सब लोग जानते हैं, ये तो अवेलेबिलिटी और रिलायबल डाटा है, सबसे बड़ा काम तो ये है। फिर डाटा बैंक की नॉन अवेलेबिलिटी है, जो कि शायद उसका आने वाले सालों में कुछ समझ ही नहीं रहा है कि आने वाले सालों में उसका प्रॉपर डाटा बैंक से हमारे पास हो जाए with respect to transactions or real estate perspective, as well as the transaction related to the machine use. फिर हमारे प्रवीण गोपाल नागपुर जैसे प्रवीण गोपाल जी का भी वही इश्यू है कि भाई डाटा जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए IPS जो है बेसिकली क्या है, बेसिकली IPS हमको एक बताता है कि हम एक प्रोसीजर से, जैसे हम कहते हैं ISO फॉलो प्रोसीजर कि हम उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वही IPS करता है। तो IPS को दो तरीके के स्टैंडर्ड है, वन ऑफ जनरल स्टैंडर्ड। जनरल वही होते हैं कि एथिक्स होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, कॉम्पिटेंस होने चाहिए, नॉन कॉम्पिटेंस को एवल्यूशन नहीं करनी चाहिए। फिर आपके उसमें स्कोप जो है हमारे रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, बट व्हाट वी शुड कंसीडर एज ए जनरल स्टैंडर्ड कि भाई जो स्कोप ऑफ वर्क है हमें सबसे पहले तो मालूम ही होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वो स्कोप हो गया, पर्पस क्या हो है, और कौन से हम लोग एवल्यूशन करते हैं तो कौन पर्पस, कुछ नॉर्मल कंडीशन होते हैं, कुछ स्टूडेंट से अंडर वेरियस एक्ट होते हैं, तो सब चीजें मैक्सिमम देखनी चाहिए। फिर आपका जनरल स्टैंडर्ड से ये भी आता है कि भाई हम कोई भी वैल्यूशन करते हैं तो हमें कोई भी वैल्यूशन असाइन होते हैं, क्या करते हैं हम देखते हैं उसका पर्पस क्या है, यही देखते हैं सबसे पहले, ये उसका पार्ट है जनरल स्टैंडर्ड का। दूसरा हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन मीन साइट विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ land building as well as machinery also, site visit, identification of assets, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मशीनरी, सब चीजों को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना, सबको उनकी दिमाग में बैठाना, फोटो देखना, अच्छी तरह उसकी जांच करना। अब क्या है कि ये सबसे बड़ा इश्यू जो आता है, जो हमारे को इससे आपका भाग में होता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि हम रिपोर्ट करनी है, हमको रिपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमको बेसिक्स चाहिए। हम बेसिक्स कौन से आता है, हमको अप्रोच ही बताई गई है कि भाई क्या अप्रोच है, व्हाट अप्रोच नॉर्मली वी कैन अडॉप्ट, कि भाई हम किस तरीके से कॉस्ट से, मार्केट से, या फिर इनकम से, तो ये बेसिक अप्रोच है। लेकिन हमेशा ये लागू नहीं होती। हमको कई बार हमारे क्लाइंट्स कह देते हैं ये इससे वैल्यू क्यों कर देते, पुराना फर्नीचर 20 साल तो अप्रोच लागू होगी, कभी नहीं लागू होगी। तो बेसिकली क्या है कि हमें अप्रोच भी देखनी चाहिए, हमको नोट करनी चाहिए कि व्हाट अप्रोच वी आर फॉलोइंग, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी वी आर फॉलोइंग, ये तो जनरल स्टैंडर्ड। फिर आगे असेट स्टैंडर्ड। असेट स्टैंडर्ड में भी हमको IGS में सारी ब्रॉड गाइडलाइंस दी गई है कि भाई हमको ये ब्रॉड गाइडलाइन फॉलो करनी है। ये नहीं बताया गया कि जहाँ पे ना तो उसके बाद कुछ नहीं।
दे आर जस्ट ब्रॉड गाइडलाइंस कि हमको नॉर्मली क्या क्या देखना चाहिए, जो कि हम जब जाते हैं साइट पे या हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, हम क्या देखते हैं वो असेट स्टैंडर्ड। तो इसमें जो नॉर्मली देखा जाए तो इनमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो कि बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू जो आता है वो वही है कि इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लायंस। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखते हैं विशेष तौर पे रियल एस्टेट हमको बताया कि सर्कलनेट मार्केट लार्ज डिफरेंस होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पंजाब the market value of the property is 7 times that of Supreme. Can you imagine 7 times हमारे यूपी में क्या है? कंपनी, दो गुनी, तीन गुनी, एक गुनी, वो 6-7 गुने से कम नहीं है इसमें। तो होता क्या है? और डाटा है नहीं। We cannot produce the reliable comparable data कि भाई ये इससे कंपेयर कर लो। होता क्या है कि हमारे ब्रांड्स है, मेनली ब्रांड्स, उनके ऑप्शन निकलते हैं, रिजर्व प्राइस पे निकलते हैं, कई बार रिजर्व प्राइस से ऊपर चली आती है, कई बार 6 बार वैल्यू नहीं आती है। अभी हम मान लो कि एक मॉल है, मॉल क्या है, ये कह लो कि एक बहुत बड़ा रिसोर्ट टाइप का होटल है, उसके 5 ऑप्शन हो, हम ऑप्शन का कंपेयर कैसे दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? सोचिए तो एक करनाल में हाईवे पे रिसोर्ट कम होटल नाम है हवेली, उसका सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट किया विद रिजर्व प्राइस ऑफ 80 करोड़ आई इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये उन्होंने पहला किया, नहीं बिका। 80 करोड़ के बाद में उन्होंने कुल मिला के 6 महीने बाद उसको 64 करोड़ पे डाल दिया, 64 करोड़ पे भी नहीं बिका। उसके बाद में 64 का आ गया अभी आपका 56 करोड़, 56 में भी बिका। 48 में आ गया तो भी नहीं बिका, 42 में आ गया तो भी नहीं बिका। अल्टीमेटली उन्होंने उसको किसी किराए पे दे दिया कि चलो किराए पे चला लो, क्योंकि वहाँ 80 करोड़ से चले थे। इसका मतलब क्या है, हम खाली सब रजिस्ट्रार ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि सर्कुलेट पर रजिस्टर्ड होती है उनसे तो कंपैरिजन दे ही नहीं सकते। यहाँ तो हाल ये आ गया है कि हम ऑप्शंस का भी बहुत मतलब रिलायबल कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है, हम आमतौर से करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स maybe 1 maybe 2 maybe 3 ये तो करते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो रिलायबल डाटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये हमारी लिमिटेशन है ना, we can always disclose the limitations in our report। तो ये लिमिटेशन है कि जो नॉर्मल सैलरीज होती हैं वो सर्कुलेट से होती हैं, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो रिलायबल डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? अफकोर्स इस लिमिटेशन से ये जरूर आता है कि हम ये जंक्शन ले रहे हैं कि हम वी आर ट्रस्टिंग सम से प्रॉपर्टी डीलर्स, उनसे भी ओरल डिस्कशन करके उनके जो भी कुछ उनको राइटिंग थोड़ी दे रहे हैं, तो ओरल, तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अजम्पशन भी है साथ में, अजम्पशन है वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर व्हाट दे आर स्पीकिंग इट और ओके, तो दिस में इम्पैक्ट द वैल्यू मार्केट वैल्यू। तो हम ये देख सकते हैं कि ये डिपार्चर फ्रॉम द आईवीएस से, तो हम जितने भी डिपार्चर्स होते हैं वो लिख सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। ये बात अलग है कि बहुत जो मेजर डिपार्चर्स होते हैं और वो आते हैं तो ये माना जाता है कि रिपोर्ट कंप्लायंट नहीं है। तो अगर हमसे कोई क्लाइंट कहता है, बैंक कहता है कि भाई आप लिखिए कि भाई रिपोर्ट इन कंप्लायंट विद आईवीएस, हम उसमें विद लिमिटेशन और विद एजम्पशन जो लिखिए कि ये हमारी एजम्पशंस और लिमिटेशन जो है ये डिपार्चर्स हैं, इफ दे आर कंसीडर्ड ओके एंड अदर पार्ट ऑफ रिपोर्ट इन कंप्लायंस, इसमें कोई बुराई नहीं होती। अब ये तो आपके भी आज के टॉपिक के बाद हमारे शर्मा जी ने एक बीच में बात कही थी कि हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो टॉपिक को। बेसिकली नेगेटिव नहीं था, बेसिकली क्या है कि ये मुद्दा आ रहा था कि हमारी रिपोर्ट कंप्लायंट नहीं हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती है, हमें नहीं लिखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था डिस्कशन का इसलिए यही था कि भाई जो क्यों नहीं हो सकती है, हमें आपस में मिलकर ये कारण जानने चाहिए, और वो आज कारण बखूबी हम लोगों ने सब हमारे स्पीकर से अच्छी तरह दिखाए, इसमें तो दो है। अब बात आती है कि हमारे क्लाइंट्स भी हमको कितना सपोर्ट करते हैं, क्लाइंट बैंकर्स,
मैं क्लाइंट पर बोल रहा हूँ, नॉर्मल शुड बी टेकन एंकर, प्लीज डोंट माइंड सर, आर के नंदा सर, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज देखिए मैं आपको आईबीआई के कुछ गाइडलाइंस, आईबीआई की गाइडलाइंस है, ये एक आईबीआई की वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट थी 8 अगस्त 2014 की, जिसमें लिखा गया था 9 नंबर पॉइंट में कि आवर इंस्ट्रक्शंस टू द वेन्यूअर आर टू बी गिवन बाय द बैंक और फाइल्स टू टेक इन राइटिंग। दे रहे हैं आपको क्या? कोई बैंक, मैं कह रहा हूँ होता है कि स्टेट बैंक जो बड़े केसेज में तो दे रहा होगा, बाकी क्या आपको कोई देता है लिखते कि ये वाले इशू करना, कोई लेटर इशू करता है या मेल इशू करता है? दे themselves are not following their own guidelines। फिर लिखते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स wherever possible shall be provided to the valuer before the valuation work begins। वैल्यूएशन वर्क बिगिन होने से पहले उनको देने हैं और कब देने हैं? ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू। अच्छा, ये आमतौर से क्या कहा जाता है, नई गाइडलाइंस आती है ईमेल से आनी चाहिए, हमको मांगने नहीं चाहिए, और हमारे ये खुद तो फॉलो करते नहीं, हमसे कहते हैं। तो हमें अगर कोई बैंक लिखने को कह रहा है कि हमारी रिपोर्ट आईबीएस से कंप्लाइंट है, तो जो हम डिपार्चर ले रहे हैं, देखिए हम सारे एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, हम सारे कॉम्पिटेंसी फॉलो कर रहे हैं, हम जो हम क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो हम क्वालिफाइड वैल्यू हैं, तो हम लिख रहे हैं कॉम्पिटेंट, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग फॉलो कर रहे हैं जो वैल्यूएशन के फंडामेंटल अप्रोचेज टू वैल्यूएशन है, हम रिपोर्टिंग भी उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली हम फॉलो करते हैं आईबीएस को, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। और जहाँ सेट स्टैंडर्ड्स है उसमें भी कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कि ये 2 से 2 4 लिखना है एक्ट है, यू हैव टू डिसाइड, वैल्यू हैज टू डिसाइड। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आपको बंदिश कर रखी, हमेशा लिख दीजिए कंप्लायंस में है, ये फला फला डिपार्चर है, फला फला एजम्पशंस है इन व्यू ऑफ ऑल दिस। ठीक है सर, ये तो हुई आईओएस की बात जो आज का टॉपिक था। दूसरी बात हमारे कुछ भाई बंधुओं ने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन से। मेरे विचार में खासकर इसको हम सेपरेटली लें तो अच्छा रहेगा, और ये क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट लैंड मेजरमेंट डिफरेंट है, स्टेट टू आप ज्यादातर स्टेट्स जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ऑनलाइन सब चीजें डाल दी है, आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए हैं, टाइटल में और एग्रीकल्चर में से इन्वेस्टर के लिए नहीं है। फिर आपके मध्य प्रदेश में मैं अभी देख के आया हूँ कि उन्होंने तो मैप्स भी डाल दिए, तो जो कि हम चेक कर सकते हैं। तो वो जो पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है, साइज में दिक्कत होती है, तो मेरे ख्याल में इसको स्टेट वाइज अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जनरल डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसके लिए वी कैन कीप ए सेपरेट टाइम और सेपरेट वेबिनार। यही मेरा सबमिशन है। तो मैं और जानना चाहें तो थैंक यू ओपी ब्रॉन सर। मेरे ख्याल में और कोई किसी का कुछ कहना हो, सुझाव कम से कम मेरा कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट रहे, सब कुछ रहे, और आज इंडिया में जो स्थिति है, जितनी प्रॉपर्टी है, और उसमें प्रॉपर्टी कुछ न किसी न किसी तरह से डिफेक्टिव वेराइज है, तो सारे डाटा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, प्रॉपर्टी को डिफेक्ट को कौन हटाएगा? इसलिए मेरे समझ से आगे सभी एप्लीकेबल है, जबकि गवर्नमेंट सारे प्रॉपर्टी को रेक्टिफाइड करे और आईवीएस स्टैंडर्ड में बनावे। और आफ्टर रेक्टिफिकेशन हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, डाटा प्रोवाइड कीजिए। वो तो डॉक्यूमेंट डाटा तो मिल सकता है, लेकिन वो 1000 में घर बना है, नक्शा पास है 500 में, तो उसको कौन तोड़ेगा? इस केस को यदि हम लिख भी देते हैं तो इसमें सबसे बड़ा क्या है कि अभी तक हम लोग जो वैल्यूएशन करके आए हैं उसमें अंदर में कमेंट लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू सच एंड सच, और यदि हम कंप्लाइंट को साइन कर देते हैं
इसका मतलब कि बाद में आप जाकर के उसको एक्सेप्ट कर दिए। मैं आपको जवाब देता हूँ। शर्मा जी, ऐसा है कि मैंने सब पहले भी ये बताया है कि आईवीएस हमको जनरल गाइडलाइंस देता है, बाकी वो वैल्यूअर की कॉम्पिटेंस है कि वो टाइटल देखे, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखे, उसमें आईवीएस ने ना ये कहा है ऐसे करो, ना कहा है वैसे करो। दिस इज योर कॉम्पिटेंस एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद द आईवीएस कंप्लायंस। इसीलिए तो आईवीएस रिपोर्ट बनाने में कॉम्पिटेंसी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आईवीएस कंप्लायंस का टाइटल से competent valuer, you will follow the idea. वो आपको देखना है एज पर योर कॉम्पिटेंस, एज You are uncompetent. आपको अगर जो be able to understand what is competency and what is not. सर, एक तरफ हम कमेंट लिखे हुए हैं और दूसरे लिख देते हैं कि नहीं दिस रिपोर्ट इज आईवीएस कंफर्मिटी। कमेंट को हमने साइड किया, सुनिए सर, कमेंट को हमने साइड किया, बाद में हमने बहुत सारा इंक्वायरी फेस किया। उसमें इंक्वायरी में क्या देखता है लोग कि भाईबल किसी चीज को हिडन किया है कि नहीं, कंसील किया है कि नहीं, सारे चीज यदि वो ओपन कर देता है तो वहां वैल्यूअर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है भाईबल। That has nothing to do with the IVS. वो आईवीएस से उससे क्या लेना देना? International value standard, they are just the guidelines how to go for values, how to do it. हमरा वो नहीं बताता है कि आप जाके इसको इस्तेमाल कर नापो ना इस तरह से करिए। आप वो नहीं कहता कि आप 1000 में बना है तो आप 500 घटा के वैल्यूएशन दे दीजिए। आईवीएस क्या कहता है सुन लीजिए, मैं बता एक जो बात का और भी है जो आपकी बात आती है मान लीजिए जो बात करी आती है डिपार्चर तो आप ले सकते हैं। डिपार्चर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड to comply with the legislative and regulatory requirements, ठीक है, that are in conflict with standards are allowed। जो भी आपको डिपार्चर्स हो रहे हैं, जो आपके लोकल एजेंसी लोकल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर वो आप फॉलो कर रहे हैं तो ये डिपार्चर अलाउड है। और मेरे को लिखना पड़ेगा कि आई एम फॉलोइंग द लोकल गवर्नमेंट गाइडलाइंस। लोकल गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या बोलती है? यू हैव टू फॉलो द बिल्डिंग बायलॉज। ये तो कह रहे हैं जो आपके म्युनिसिपल रेगुलेशंस है यही तो फॉलो करते हैं। वो डिपार्चर अभी तक जितना वैल्यूएशन हुआ है इसी तरह से हुआ है। अगर आप यहाँ तक आईबीएस में यदि साइन करते हैं तो वो जो जितना कमेंट सील हो जाता है, अगर आप कमेंट जो है वही सील करते हैं, लास्ट में इसको सप्रेस कर दिया है, लास्ट में इसको ठीक माना। ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर्टी गलत है, वो नहीं है जिसके टाइटल डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसकी वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते। अब आप राम गोविंद जी, आपको मैं एक प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल 100% ट्रूथ। नहीं, मेरे समझ से एक प्रॉपर्टी हमने जो भी लिखा है बैंक को मिल जाए, लेकिन आप नहीं भूल जाएंगे, वो रिटर्निंग का भूल जाएंगे। आप मिलेगा ना मिलेगा, दैट इज नॉट योर हेड। यू आर अबाउट आईवीएस, यू आर नॉट आईवीएस और उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की गई। राम गोविंद जी सुनिए, एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की गई, इसी समय मुझे लगा कि ये प्रॉपर्टी सही नहीं है, फिर आईबीएस क्यों साइन कर रहे हैं? एक तो सही नहीं है और एक आईबीएस कंफर्मिटी में साइन कर रहा है। बात तो सुनो, आगे तो सुनेंगे तब आप कहेंगे बड़ा अच्छा नहीं है। आप सुनिए तो देखिए, मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेबल नहीं था। प्रॉपर्टी को आप 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। सर, आप जो बोल रहे हैं सुनिए, पहले आप सुनिए जो आप अभी आप पहले सुनिए, फिर वो मैटर खत्म हो जाएगा। आप सुनना नहीं चाहते, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए।
मेरे व्यू में तो ऐसा नहीं है। हम दिल्ली शहर में अभी एक महीना पहले ही मैं मुझसे प्रॉपर्टी देखने को आ गया था, तो खसर नंबर था, जिन्हें प्लॉट नंबर भी था, खसर नंबर था। तो मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने पुरानी रिपोर्ट बता दी है। तो हम लौट के आए, हमने कहा भाई ये इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो आप खसर नंबर बता रहे हो, जो प्रॉपर्टी दिखा, दोनों में 1 किलोमीटर का अंदर है। तो ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन ये हम जो ये सब पॉसिबल है। फाइनली लिसन, चलिए मेरी बात मैं जैसे पूरी आपकी सुनता हूँ, तो बोलता हूँ, हमारी पूरी सुन तो किसी ऐसा है। जब हम देखते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं आईवीएस कंप्लायंट रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो हम सिंपल लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, इसकी वैल्यू हम नहीं कंसिडर करते। यहाँ पर शर्मा जी आप अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाइए, ये आप अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाएंगे तो आपको कोई बैंकर कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ा लोन था, जो बता रहा हूँ वो बहुत बड़ा लोन था, एनपीए हो गया, वो बंदा आज जेल में, आज की डेट में जेल में है, जो लोन लिया था आज की डेट में जेल में है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, हमारी रिपोर्ट में ऐसे कुछ लिखा था, हमने क्लियर कट लिखा था कि ये किया जाए, वो नहीं किया बैंकर ने, बैंकर मिलकर किए थे, और आज की डेट में वही लिखना मुझको बचाया। सर यही बात तो मैं भी बार बार कर रहा हूँ, ये अभी तक की बात आप बोल रहे हैं, वो जो हम कमेंट लिखते हैं वही बचाता है, लेकिन उसके ऊपर यदि आप अभी साइन करते हैं तो उस कमेंट को वो सीज करता है, सरकार आईवीएस कमेंट को सीधा सीज करता है। क्यों लिखेंगे हम कि आईवीएस कंप्लायंट, इसीलिए आज के डेट में वो साइन करते जा रहे हैं, साइन करते जा रहे हैं। वो नहीं कर रहा है, जो कॉम्पिटेंट मेंबर है वो नहीं लिखेगा, लेकिन कमेंट वहां सीज कर जाता है। कोर्ट में जाकर एक कमेंट पूछा जाएगा, जब आप कमेंट कभी नहीं लिखेगा। फिर आपके इसको आगे बढ़ाइए भाई, चलो और किसी को कुछ कहना और सजेशन प्लीज। बहुत अच्छा लगा सभी से जो है, और किसी को कुछ। वर्मा साहब ने काफी डिटेल में जो है सबके एनालिसिस भी कर दी, तो मेरे ख्याल वर्मा साहब ये प्लेटफॉर्म शेयरिंग ऑफ नॉलेज के लिए है। जी इसी में है ये प्लेटफॉर्म में जो भी प्लेटफॉर्म होता है प्रॉपर वे में शेयरिंग ऑफ नॉलेज के लिए ही होता है। हम लोग उसका प्रॉपर यूज करता हूँ, जो आप बताते हैं मैं सीखता हूँ। जी सर, यही एक दूसरे से सीखा जाता है, कुछ मिलता है, कुछ देता है आदमी, तो कुछ पाता है। मेरे ख्याल में और किसी को साथ कुछ कहना नहीं है। सर तो हाँ संजय गुप्ता जी बोलिए। सर मैं केवल सभी लोगों को पहले प्रणाम करता हूँ, जो हमारे बड़े सीनियर्स हैं, सभी लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है। मेरा कहने का मतलब है, आज जो आईवीएस स्टैंडर्ड की बात चल रही है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जितने भी बैंक हैं इनके अलग अलग अपने परफॉर्मेंस हैं। किसी बैंक का परफॉर्मर ये होना चाहिए, सजेशन आप ये दीजिए कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका एक परफॉर्मर होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स का, वेल्थ टैक्स का एक परफॉर्मर है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूअर क्या कहते हैं अपने मन से कुछ भी लिख रहा है। आप किसी भी बैंक में जाइए, पता पड़ा इंडियन बैंक का परफॉर्मर 4 पेज का, तो आईपीएस स्टैंडर्ड आप फॉलो कैसे कर रहे हो? उसमें इतनी ज्यादा जगह ही नहीं लिखने की, इतनी डिटेल लिखने की जगह नहीं है। गुप्ता जी आईपीएस कंप्लायंट रिपोर्ट बनाएंगे तो 30 पेज का बनेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक कम से कम हम लोगों का सजेशन ये जाना चाहिए कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका एक जगह पे परफॉर्म हो, तब तो आइडेंटिटी हम लोग बना सकेंगे। नहीं कर पाएंगे, ये सब चल रहा है, आने वाले समय में एक ही प्रोफार्मा होगा, लेकिन उसके लिए अभी आएगा जैसे इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन को थोड़ा झंडा लेके आगे खड़ा होगा। चलिए हमारा संजय गुप्ता जी ने एक सजेशन दिया, अच्छी सजेशन है। एक्चुअली बैंक का अलग फॉर्मेट होने से हमारे नजर में आईपीएस का मीनिंग यही होता है कि राइट प्रॉपर्टी, आईबीएस कंफर्मिंग प्रॉपर्टी, दूसरे टर्म में राइट प्रॉपर्टी बोला जाता है। आईबीएस कंफर्मिंग रिपोर्ट राइट वैल्यूएशन बोला जाता है। जो कितना भी डॉक्यूमेंट मिल जाए, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट
दोनों ठीक होना चाहिए। आप कुछ भी लिख झंडा दिखा नहीं? लास्ट झंडा में दिखा? जाकर के आप कुछ नहीं करेंगे। वो जब तक बैंक में रहेगा, सब कुछ रहेगा, एनपीए नहीं रहेगा, गाड़ी चलते रहेगा, कोई नहीं पूछेगा, और लास्ट में जाकर क्रिटिकल पोजीशन आ जाएगा ना, तो सीधा निकाल करके दिखा देगा कि आपने लास्ट में इसको संजय गुप्ता जी, आपका पॉइंट को हमने नोट किया है, तो हम लोग उसको हाँ आगे बताइए आगे आगे बढ़ा जाए। बताइए। नमस्कार सभी। हाँ बोलिए। करिए सर। मेरा सर बस ये कहना था कि इस पे जरूर लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। यदि एक परफॉर्मा होगा तो हमारे भाई लोग जो भी हैं, इनकेस कोई नजरअंदाज करके गलती कर भी देते हैं तो परफॉर्मा में वो तब टोटल कॉमन परफॉर्मा होगा, तो आपको कंपेरिजन करने में भी आसानी होगी। किसी वैल्यूअर ने 20 लाख दे दिया वैल्यूएशन, कोई वैल्यूअर 50 लाख दे रहा है, कोई 40 लाख दे रहा है, उनसे अलग अलग फॉर्मेट में दोनों अलग अलग में आईडीएस कोड परफॉर्मा नहीं देता है। अलग अलग फॉर्मेट में हमें काम करने में दिक्कत होती है। भाई स्टेट बैंक वाला फॉर्मेट है, बैंक अभी तो स्टेट बैंक और अभी मैं देख रहा था स्टेट बैंक ने फिर पीएनबी का फॉर्मेट ऑर्डर कर लिया, अभी कल परसों ग्रुप में आया था। सर हम लोग यहाँ बैंक से भी मतलब नहीं है, हमें दूसरा को भी वैल्यूएशन दिया, हमें प्रॉपर्टी या अपने रिपोर्ट से चले संजय गुप्ता जी, आपका पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। कोई इंक्वायरी में आता है। और सर कुछ और सजेशन प्लीज। और सर किसी को कहना कुछ? सर मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया। आज जल्दी जाने के मूड होना इसलिए खत्म हो रहा। नहीं भैया, टाइम हो गया। चलो चलो ठीक है, टाइम हो गया, तो इसलिए हम मेरे ख्याल वोट ऑफ थैंक्स के लिए जाएंगे। 10% बढ़ा घटा हो वो बहुत नहीं माने हमारा है, लेकिन ये आईबीएस में साइन करना, कंफर्मिंग साइन करना सिंपल मैटर नहीं। चलो हमारा साथ आज हमारा सेक्रेटरी नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है, तो हम अपना दोस्त रंजन नाना से रिक्वेस्ट किया था कि उन्होंने मान भी लिया। वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी हमारे रंजन नाना साहब जो है, जो भोपाल से है और हमारा चेयरमैन भी है। रंजन नाना साहब प्लीज सबको वोट ऑफ थैंक दे, सब लोग घर जाने का, मतलब सब लोग घर ही में तो है, खैर मतलब खाना खाने हम भी तो रंजन साहब प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ठीक सर, थैंक यू। चलो राणा साहब थैंक यू कह रहे हैं। Am I audible? Yes, sir. Yeah, thank you for giving me an opportunity to propose a vote of thanks. But I would add a line from my side that India is passing through this transition phase, and we are facing difficulties just because we are a developing country and we are trying to follow a developed country's norms, and that is why we are discussing. And thank you, Dasa, for creating AIVA platform, and thank you, Dasa, for giving us an opportunity for this web meeting. Thank you, Nanda Sahab, for giving his precious time on a holiday to the valuers and hearing them patiently. Thank you, O.P. Verma Sahab, for conducting this meeting. And thank all the participants and especially speakers for giving their point of views. Though there are several point of views, but the common factor is that we have to reach a conclusion. And I guess O.P. Verma Sahab has noted down many things, and I will write to the government a proper thing. So thank you everyone for 2.5 hours of patient listening and giving the suggestions. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you. Namaste. Good night. Good night.